स्टार्ट तो स्टार्ट हो गया जी। हाँ, लॉग इन होना भी शुरू हो गया, अटेंडीज दिखना शुरू हो गए। तो आपके पास 530 रजिस्ट्रेशन ऊपर आए। यस सर। चलिए, वेरी गुड, दैट मींस दिस टॉपिक इज वेरी अट्रैक्टिव। क्यों मोहन जी? हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब है लोगों के मन में इस टॉपिक के प्रति काफी जागरूकता है। हाँ, टॉपिक के प्रति भी है और स्पीकर के प्रति भी है, दोनों ही बातें हैं। हाँ, स्पीकर भी अच्छा ही है और नंबर भी है। आपके स्टडी सर्कल की तरफ भी है, दोनों बातें नहीं बातें हैं सर। हाँ, तीनों हो गए। स्पीकर, सेंट्रल दिल्ली स्टडी सर्कल ने बहुत दिनों से नहीं प्रोग्राम किया, अब लगातार ये दूसरा है। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे ख्याल से अगला तीसरा भी नेक्स्ट वीक फाइनल है। अभी डेट स्पीकर फाइनल नहीं किया, मोस्टली माइकली 12-13 तारीख को कर रहा हूँ। 12-13 तारीख। वेरी गुड, वंडरफुल। अब हम लोग एक्टिव नहीं, सुपर एक्टिव हो जाएंगे। नहीं, अब रेगुलर करेंगे। नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छा है। हफ्ते 10 दिन में एक एक प्रोग्राम होता रहे। वो गौरव जी से पूछो लिंक आया कि नहीं उनके पास। मैडम भेजिए उनको लिंक। यस सर, कर दिया सेंड मैंने। अच्छा, मैं कॉल करता हूँ। सर अभी व्हाट्सएप पे आया है। अच्छा, व्हाट्सएप पे आया है। हाँ, मैं भी मेल पे लिंक ज्वाइन कर। हाँ, ओके, हाय हाय, वेलकम। आ गया उनके पास। ठीक है सर। ही इज ज्वाइनिंग। सर आप अपना फोन ना अपडेट कर लीजिए, पूरी स्क्रीन में जानकी में अपडेट कर लीजिए। अपना मेंबरशिप नंबर मत भेजिए, क्योंकि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और अब लॉगिन हो चुके हैं और अटेंडेंस उनकी रहती है, तो उनको अटेंडेंस मिलेगी। तो प्लीज अपना ये मेंबरशिप नंबर नहीं लिखिएगा। गौरव जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हालचाल? वेलकम वेलकम। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार मोहन मित्तल जी, कैसे हालचाल है सर? हाउ आर यू? बहुत अच्छे हैं। बड़े मेरी दिनों आवाज बाद। आ रही है सर प्रॉपरली? हाँ, बहुत अच्छी तरह से आवाज आ रही है। तो बड़े दिनों से सेमिनार नहीं हो रहे थे हमारे स्टडी सर्कल के, तो अभी वो बॉम्बे आप मुलाकात हुई तो मैं कहा एक बार गौरव जी से भी रिक्वेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा समय निकाल लें। सर माय प्लेजर सर। आपने उसी वक्त हाँ भर ली थी कि हाँ मैं आऊंगा आपके सेमिनार में। हमने सोचा कि अभी फिजिकल करने की बजाय ऑनलाइन ही करें। ऑनलाइन में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि स्पीकर को समय मिल जाता है पूरा, एक तो अपनी बात रखने का, और एक कम्यूटिंग में जो टाइम उनका वेस्ट होता है वो बच जाता है। बेस्ट है सर, बेस्ट है। तो अच्छा, जिनको एजुकेशन लेनी है वो मेरा ख्याल ऑनलाइन में ही ज्यादा अच्छी मिलती है, मैं ये मानता हूँ। मोहन जी कहीं से भी बैठ के ले सकते हैं पूरे। ऐसे ही बैठ के। अब जरूरी नहीं है दिल्ली में हो, हमारे एनआईआरसी में किसी भी जगह हो राइट। वो ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा हो गया, 5 स्टेट में एनआईआरसी है, तो दिस इज वेरी गुड। करेक्ट सर, करेक्ट। अब तो टेक्नोलॉजी का इतना फायदा हो गया है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे वेबिनार्स एक अच्छा प्रोफेशन बन के आगे निकला है। और क्लास में तो फिजिकल अटेंडेंस तो 10, 20, 50 किलोमीटर से ही आदमी अटेंड कर सकता है।
और ये तो बहुत अच्छा, मतलब कोरोना है फिजिकल में एक डिफरेंट टाइप की फेलोशिप होती है, वो अलग बात है, लेकिन अलग ही। वो फेलोशिप अब नहीं है। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, देयर आर मोर देन 200 राइट नाउ, वी आर अनएबल टू सी ऑल ऑफ देम। ठीक है, वो नाम आ रहे हैं, बाकी वो जो हाँ, फिजिकल ये तो रहता है, वो लोग भी बोल नहीं पाते हैं, राइट उनके भी हम लोग वीडियोस नहीं देख सकते हैं, लिमिटेशन तो है। राइट। लेकिन देखिए, कोई भी प्रश्न है, गौरव जी, अभी आप जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो अभी आप शुरू में चाहेंगे कि लोग कुछ क्वेश्चन लिखें जिससे कि आप अपना प्रेजेंटेशन अलाइन कर सकें? सर एक बार मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, ठीक है। और जो इशू चल रहा होगा उस पे मेंबर्स आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए, मेंबर्स के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कोई चीज चल रही है, कोई टॉपिक चल रहा है, तो उस टॉपिक पे आप तुरंत अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में आप, या क्वेश्चन आंसर में, Q&A में आप रेज कर सकते हैं। करेक्ट। और जैसे ही उस टॉपिक के दौरान गौरव जी जो है उस चीज को, क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, तो साथ ब साथ आपके जितने भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द सेशन में कई बार बड़ा मुश्किल होता है सारे डाउट्स क्लियर करना। ये साइड बाय साइड ठीक रहेगा। पूरी कोशिश रहेगी सर। सो नाइस, सो नाइस। तो ब्रजेश जी स्टार्ट करो, आगे बढ़ो। अच्छा, 4:10 हो गए। चलिए चलिए। ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल दिल्ली स्टडी सर्कल, आई वेलकम ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। और बड़ी प्लेजर की बात है कि हम लोग कुछ समय से एक्टिव नहीं थे, और आज हम लोगों ने मन बना ही लिया, और स्पीकर्स के सहयोग से अब एक्टिव हो चले हैं। अभी पिछले हफ्ते ही किया था, और अब उम्मीद ये है कि अगला भी 12-13 तारीख को या उसी में ही अराउंड नेक्स्ट वेबिनार भी करेंगे। तो मैं वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेमिनार एज वेल एज फॉर दी आवर फ्यूचर सेमिनार्स ऑल्सो। और लास्ट टाइम भी जैसा बताया गया था कि हम लोगों ने अपनी जो, यदि कोई ईच सेमिनार वाइज ज्वाइन करना चाहता है तो सिर्फ 100 रुपये पार्टिसिपेशन फी है, और साल भर की मेंबरशिप जो है वो सिर्फ 1000 रुपये है। और साल भर का मतलब है द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। आप आज तारीख 12 तारीख से ज्वाइन करते हैं, तो 7 तारीख से आप ज्वाइन करते हैं, तो अगले 1 साल बाद आपकी मेंबरशिप वैलिड रहेगी। तो मैं अब अपने स्पीकर जो हैं आज के, गौरव जी, मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूं और उनको वेलकम करता हूं। तो गौरव जी से मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सब लोगों से कि मेरा संपर्क इनसे 18 साल से पहले का ही है। 18 साल इनको CA करे हो गए, और मैं भी बहुत सारा इंटरेस्ट रखता हूँ एजुकेशन में। तो MCS क्लासेस जो हैं मैं 2002 से जब से बनी हैं, जब भी मौका मिलता है मैं लेता रहता हूँ, और उसी के दौरान मुझे आपसे मुलाकात हुई, और तब से आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि गौरव जी सेकंड टर्म हमारे NIRC के मेंबर हैं। एक 2019 से 2022 तक टर्म था, अब कॉन्जिक्यूटिव सेकंड टर्म में भी आप इलेक्ट हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पॉलिटिशियन इसलिए नहीं है पॉलिटिक्स में कि ये पॉलिटिशियन है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें, अपने प्रोफेशन में। ये बहुत अच्छी बात है। और इंटरनेशनल टैक्सेशन को तो मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि आप लेके चले हैं, और 1-2 बार मैं इनके पर्सनल प्रोग्राम भी मैंने अपने अटेंड करे हुए हैं। तो बहुत अच्छी आपकी होल्ड है। और ये निकासा के भी जो चेयरमैन हैं स्टूडेंट, उसके भी रह चुके हैं 21-22 में। और एक कमेटी ऑन इंटरनेशनल टैक्सेशन जो ICI की है, ग्रुप है, उसके भी मेंबर हैं, जिससे कि OECD कंट्रीज जो 37 कंट्रीज हैं उसमें अपने रिकमेंडेशंस को, अपनी फाइंडिंग्स को आप शेयर करते हैं। तो उन्होंने एक बुक्स भी काफ़ी लिखी हुई हैं, मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट एंड एपिटोम बुक भी आपने लिखी हुई है। और इंटरनेशनल टैक्सेशन की ICI में जो प्रोग्राम होता है, अलग से सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है, उसमें फैकल्टी हैं उस कमेटी में। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप गौरव जी को देख चुके हैं, बहुत अच्छे एक्म्प्लिस्ड प्रोफेशनल हैं, और एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं। आई थिंक हम सब लोग उनको सुने, और आपको टॉपिक आपके सामने सब शेयर करा ही है। तो टॉपिक के बारे में थोड़ा सा
आप इंट्रोडक्शन दीजिए गौरव जी, सेक्शन 195 TDS से लेके आगे भी, और मैं अब हैंड ओवर करता हूँ गौरव जी को। Thank you, Brijesh sir. Very good afternoon to all the participants in today's webinar. मैं मोहन मित्तल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा. He gave me this opportunity, as he rightly said, during Wakao World Congress of Accountant, which was fantastic event, and I think one of the largest event in the history of accountants, which happened in Mumbai. वहाँ पे सर से मुलाकात हुई, and सर said कि गौरव एक webinar करना है, and we certainly सेंट्रल दिल्ली स्टडी सर्कल की बात हो और उस अपॉर्चुनिटी को कोई छोड़े, वो तो मुझे नहीं लगता कोई छोड़ेगा. आई सिंपली सेड यस. एंड आई हैव सीन मोहन सर, यू नो, व्हेन आई क्वालिफाइड वे बैक इन 2004, तब से कहीं ना कहीं वी ऑलवेज सी मोहन सर इज एक्टिव, एंड कुछ ना कुछ चलता रहता है, चाहे इलेक्शंस हो, चाहे इलेक्शंस के बाहर हो. जनरली लोग इलेक्शंस के बाद यू विल नॉट फाइंड दे आर एक्टिव इन द पब्लिक लाइफ, बट ही इज स्टिल कंट्रीब्यूटिंग. आई थिंक दैट इज अ great stuff, and that shows the true leadership of Mittal Sahab. Brijesh sir is my teacher. You know, I have done a course in way back in 2004. Sir, 2004. मैंने qualify होने के बाद GMCS किया था, and you were the faculty in the GMCS. Yes. तो तब सर से हम बड़े impress हुए थे, और we were in touch before. आज हम सब आपसे बहुत impressed हैं. So I am your student, sir. मतलब बहुत थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगता है आपके अचीवमेंट्स को देख के. देखिए, तो बड़ों का आशीर्वाद है. So today's topic is non-resident taxation. मतलब in brief, basically I would be covering section 195, applicability of TDS. Then आजकल एक latest issue है form 10F का online filing का, and it's, you know, people are somewhat confused about 206 AA. कि अगर पैन नहीं है तो क्या 20% लगेगा, 10F नहीं है तो क्या होगा. So we're going to discuss that. We're going to touch upon the basics of non-resident taxation. मुझे लगता है if you are clear on the basics तो बहुत सारे issues आपके sort out हो जाते हैं. But मैं एक चीज जरूर कहना चाहूँगा कि being I'm part of the Northern India Regional Council, and I think the blessings of all of you, because of whom I am here. That NIRC on 9th and 10th of December, that is Friday and Saturday, is hosting a national conference on international taxation at EROS, which is organized by International Tax Committee of ICI, and NIRC is hosting the same. It's a 2 days program. So for anyone who is interested in international tax, who is doing non-resident taxation, who is working on Form 3CB. See, now when I talk about the global organization, so the global organization is not only the organization जिसके offices 3, 4, 5, 6, 10, 100 countries में हो, but global organization is also the organization which has got the cross-border transactions. उसका कुछ services आ रही हैं foreign से, या वो India से बाहर export कर रही है, services दे रही है, commission agents हैं. They are also, you know, part of, we can say we can classify them as a global organization. So आपका कोई client है जो Indian है, but let's say they are making payment to non-residents, they have commission agents outside India, or they want to expand. आज आपका एक client है, हो सकता है उसका India में territory हो, but he wants to expand to United States or UAE or, you know, Australia or Africa or European region. So when the cross-border transactions are increasing, I think we all have this opportunity to grab, and India is taking front seat when it comes to the economic growth, we all know. So मेरी आप सबसे request है, international taxation या non-resident taxation बहुत ही अच्छी field है, and we are doing a 2 days program. बहुत अच्छे speakers आ रहे हैं, बहुत अच्छे topics हैं. आपको नहीं भी आता तो भी attend करिए, because we would be starting with the basic. आपको आता है तो भी अटेंड करिए, क्योंकि we would be covering certain advanced topics in that international 2 days international tax conference. EROS में है, the fees is only 1500 plus GST, and annual members के लिए तो it is certainly free.
and we have already, you would be happy to know, sir, it's a physical program, and we have already received more than 330 registrations, and it would going to be one of the biggest program for members by NIRC in last 3-4 years. तो उस सब में मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज आए, आपको अच्छा लगेगा. Now coming to my topic, section 195 TDS. Before we move on to section 195, we know the hierarchy. और आपके जो क्वेश्चन हो, आप क्या कर सकते हैं, आप ना अपना हैंड रेस कर लीजिएगा या चैट बॉक्स Q&A में डालिएगा, क्योंकि चैट में ना बहुत सारे मेंबर्स अपने मेंबरशिप नंबर डाल रहे हैं, तो हो सकता है मैं आपका क्वेश्चन मिस कर दूं. मैं यहाँ पर सबसे रिक्वेस्ट दोबारा करना चाहूंगा, प्लीज अपना मेंबरशिप नंबर चैट बॉक्स में मत डालिए, क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी है. आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए, लॉग इन हो गए, तो आपको जैसे भी ड्यूरेशन आपकी फिनिश होती है, आपको अटेंडेंस मिलेगी. प्लीज अपने क्वेश्चंस को Q&A में आप क्वेश्चन आंसर सेशन उसमें बॉक्स में डालिए. थैंक यू सर. विजय जी, मैं सेमी अटेंडेंस की बात ये करना चाह रहा हूँ. आज की तारीख में CPRs के लिए फीस पे करना मैंडेटरी है. जो रेगुलर स्टडी सर्कल के मेंबर है वो 1000 दे दें, जो 1 साल के लिए वैलिड है, और जो स्टडी सर्कल के मेंबर नहीं है उनको 100 रुपीज पे करना पड़ेगा. अदरवाइज बगैर पेमेंट के बगैर CPRs नहीं मिल सकते. तो जो भी मेंबर्स इस ग्रुप को जिन्होंने भी अटेंडेंस यहाँ मार्क किए, 200 कुछ लोगों ने, जिन्होंने पे नहीं किया है उनको पे की लिंक भेज रखे हैं, वो पे जरूर करें उसके. हाँ बिल्कुल, बगैर पे किए बगैर CPRs देना में प्रॉब्लम हो जाएगा. ये प्रॉब्लम नहीं, मैं सबसे अपील कर चुका हूँ ऑलरेडी. ठीक है. लोग भूल जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए. और मैं तो कहता हूँ कि आप हमारे जो ऑलरेडी मेंबर्स थे वो सब 1000 रुपये दें, और जो मेंबर नहीं भी हैं वो भी 1000 रुपये दे के ज्वाइन करें, और सब अपनी आपस की सब प्रोफेशनल कंपनी का आनंद लें. ठीक है सर, कंटिन्यू सर प्लीज. ओके, तो आप Q&A में डालें. Q&A helps me in tracking the same. Please send the payment link. आजाद जी मैं भेज दूंगा. हार्दिक, I will send you the link थोड़ी देर में. During the discussion, बात करते करते I will put the link. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है Q&A में क्वेश्चन आंसर डालें अपने, because Q&A allows me to track मैंने कौन से क्वेश्चन को आंसर कर दिया, कौन से क्वेश्चन को आंसर नहीं करा. And if you feel there is a difficulty in typing, तो आप अपना hand raise कर लीजिएगा. At the appropriate time, I will allow you to speak, to raise your voice, to raise your question, and we would have a both two-way discussion. Now, starting with the section 4, we have section 4. You all know we have section 5. Section 5 basically talks about the scope of taxation. I would be sharing the presentation share कर लेता हूँ. Hope my screen is visible. Yes, it is visible, clear. Okay, so we have section 5, which talks about the scope of taxation. And as far as non-residents are concerned, we know there are 2 types of income are taxable in India. First type of income, which is accrued or deemed to accrue or arise in India, that is taxable. Second, which is received in India or deemed to be received in India, that is taxable. Now, as far accrue is concerned, it means, where one is getting right to receive the payment. So for example, I am doing some activity, और मेरी वो activity खत्म होने के बाद मेरा right आता है, then the accrual pertains to the execution of that activity or the completion of that activity. So where I am completing that activity, therein the income gets accrued. As far as deemed to accrue or rise concerned, we all are the students of tax. So there is nothing called deemed. Deemed is a fiction, and fiction is created in the section or via section. So we have section 9, which talks about the deeming provision. So if you go to section 9, it says, in the following circumstances, your income would be deemed to accrue or arise in India. तो अगर हम किसी नॉन रेजिडेंट को टैक्स करना चाह रहे हैं, सबसे पहले we will go to section 5 and then we will go to section 9. So either it should hit by section 5 or by 9.
अगर वो सेक्शन 5 और 9 की कवरेज में नहीं आता है तो उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है. Once the income becomes taxable in India, then you go to the double taxation avoidance agreement, and we have section 90 subsection 2, which says कि the provisions of the DTA would be applicable on the taxpayer to the extent they are more beneficial. Which means agar DTA is more beneficial to the taxpayer, then you will apply the provision of DTA. But if DTA is not beneficial, we will not apply the provision of double taxation avoidance agreement. Now we have section 90 subsection 4 and section 90 subsection 5, which says कि if you want to claim the benefit of the treaty, that is the non-resident wants to claim the benefit of the treaty, they need to submit the residence certificate issued by their home country. So for example, your client is a non-resident of Singapore and he wishes to claim the benefit which is there in the tax treaty. He can only claim the benefit if he gives you the tax residency certificate. It is like visa. भाई अगर मुझे किसी country travel करना है तो if I don't have the visa, I cannot travel that country. Correct, Brijesh sir? Yes, definitely. Similarly, if I do not have the tax residency certificate, I would not be able to prove कि मैं किस country का tax resident हूँ. And if I am not able to prove, then certainly, I cannot claim the treaty benefit. तो section 90 subsection 4 कहता है कि भैया आपको देना पड़ेगा TRC. तभी हम आपको एक treaty का benefit allow करेंगे. And India has got treaty with approximately 104 countries. 96 के साथ we have comprehensive agreement, and almost I think 8 countries के साथ we have limited agreement, which makes roughly around 104. And then if we do not have treaty, then there are many countries other than 104 with whom we do not have treaty. So we will restrict ourselves to section 5 and section 9. तो फिर हम ट्रीटी बेनिफिट उसको दे ही नहीं सकते, तो डीटीए में जाएंगे नहीं. गौरव जी, मैं 1 मिनट रोकना चाह रहा हूँ आपको. एक हाँ जी बिल्कुल सर. ये मैडम, कुछ लोगों की शिकायत आ रही है कि भी रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है, तो क्या आपने बंद कर दिया क्या रजिस्ट्रेशन? सर रजिस्ट्रेशन बंद नहीं करा है, अटेंड ही रोक दिए हैं क्योंकि 250 अब चले गए थे, तो इसलिए मैंने रोक दिए. अलाउ कर दोगे फिर से? हाँ, अगले 2-5 मिनट के लिए खोल दो, कोई बात नहीं है, फिर बंद कर देना. ठीक है. हाँ हाँ ठीक है. Continue, sir, please. Okay, so अगर हमारी किसी कंट्री के साथ ट्रीटी नहीं है, then certainly they cannot claim the treaty benefit. So we'll restrict ourselves to section 5 and section 9 and section 115 है. जो भी relevant sections है वहीं तक हम अपने आप को रोक के रखेंगे. But if there is a treaty, then he needs to submit the tax residency certificate under section 90 subsection 4, and also we have section 90 subsection 5, which says कि कुछ और other information requirement है वो भी submit करिएगा. And then you go to rule 21AB. Rule 21AB talks about form 10F, जो आजकल latest hottest debate बना हुआ है. And form 10F has got certain information. And then we have rule 21AB sub rule 2, which says कि अगर जो information which are prescribed in rule 21AB sub rule 1, अगर वो TRC में mentioned है तो आपको 10F देने की जरूरत नहीं है. So there is a complete confusion. So first of all, before I moved on to this discussion, जब मैं treaty और उसको मिला के पढ़ूंगा, उससे पहले कहाँ और कैसे application है form 10F की, sir with your permission पहले उसको discuss कर लेते हैं. It's an important topic. So pre-July क्या होता था? There is a notification number 3 of 2002. So pre-July 2002 form 10F फॉर्म TRC हम नॉन रेजिडेंट से लेते थे, उसको ट्रीटी का बेनिफिट देते थे और मौज करते थे, और नहीं भी होता था तो बाद में ले लेते थे, कोई टेंशन नहीं थी. बट अब ये सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं. आपको ऑनलाइन लेना पड़ेगा, वो ऑनलाइन सबमिट करेगा. और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब कोई मेरे पास आएगा कि गौरव 15CB इशू करिए, तो विदाउट 10F या TRC में उसको ट्रीटी का बेनिफिट कैसे दूं? हो सकता है जब फिजिकल फॉर्मेट में है तो आपको क्लाइंट कह देता हो सर वहां से फॉर्म 10F चल पड़ा है, आने वाला है, आप फॉर्म 15CB इशू कर दीजिए, और आप जब क्लाइंट से मिलने गए उसने आपको 10F हैंड ओवर कर दिया.
but up to now things are completely online. So you need to have all this document before issuing 15 CPE. But how this works? We did, we were discussing with the team and we find out that there are 5 possible scenarios. First possible scenario is that just party से आपकी transaction हो रही है non-resident, he belongs to that country जिसके साथ हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है. सर ये हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगी ना सर? हाँ श्योर सर, बिल्कुल. कई बार क्या होता है, व्हेन यू डू अ वेबिनार, मेंबर्स ज्वाइन फ्रॉम साउथ इंडिया आल्सो दे कंप्लेन कि व्हाई वी आर स्पीकिंग इन हिंदी. नहीं वो ठीक है, लेकिन अब वही है ना कि जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया है तो हमारी लैंग्वेज तो हिंदी प्रोमिनेंट रहेगी. बिल्कुल सर, मैं तो इंग्लिश मूवी भी हिंदी में सुनता हूँ. मुझे लगता है अगर दिमाग लगाना पड़ रहा है मूवी सुनते हुए तो कैसे एंटरटेनमेंट होगा. So now first possible scenario, you have a transaction with a non-resident with whom we do not have double taxation avoidance agreement. जहां मेरा DTA ही नहीं है वहां ट्रीटी बेनिफिट की तो बात ही नहीं उठती. तो अगर ट्रीटी बेनिफिट की बात नहीं उठती तो सेक्शन 90 सबसेक्शन 4 पिक्चर में नहीं आएगा, ना सेक्शन 90 सबसेक्शन 5 पिक्चर में आएगा, ना रूल 21A भी पिक्चर में आएगा. तो वहां पे तो आपको 10F की जरूरत ही नहीं है. तो वहां तो आप निश्चिंत रहिए. अब 10F ऑनलाइन होने से क्या हुआ है सर कि नॉन रेजिडेंट का परमानेंट अकाउंट नंबर मैंडेटरी हो गया है. वेयर 10F देना है. अभी क्या होता था कि वो अपना TRC देते थे, 10F देते थे, हम उनको ट्रीटी बेनिफिट दे देते थे और हम उनका परमानेंट अकाउंट नंबर से हमें कोई सरोकार कोई जरूरत नहीं थी, ना नॉन रेजिडेंट को जरूरत थी. तो नाउ ऑनलाइन होने से 10F के फॉर्म PAN permanent account number की जरूरत आ गई है. So on the first possible scenario wherein we do not have double taxation avoidance agreement, therein we do not need 10F and we do not need PAN. तो आप टैक्स एक्ट में देखिए कितना टैक्स रेट है, टैक्सेबल है या नहीं है, उस हिसाब से आप TDS काट के दे दीजिए. सेकेंड पॉसिबल सिनेरियो कि वी हैव, अब मेरे जो रिमेनिंग 4 सिनेरियोज हैं उन 4 सिनेरियोज में वी हैव अ DTA. तो 1 सिनेरियो हमने देखा जहां मेरा DTA नहीं है, बाकी 4 सिनेरियोज आई वुड बी कवरिंग जहां मेरा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है. Now the first possible scenario is the income is not taxable under the act. If income is not taxable under the act, so section 90 subsection 2 याद करिए सर, the provision which are more beneficial would be applicable to the extent they are more beneficial. And being it is not taxable under the act, तो certainly आपको treaty benefit की जरूरत ही नहीं है. अगर आपको treaty benefit की जरूरत नहीं है तो आपको TRC की जरूरत नहीं है, आपको 10F की जरूरत नहीं है, आपको PAN की जरूरत नहीं है. अब ऐसा एग्जाम्पल कोई होगा, कोई ऐसा एग्जाम्पल की ट्रांजैक्शन इज नॉट टैक्सेबल अंडर द एक्ट. अब मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप अपना आंसर टाइप करें चैट बॉक्स में. क्वेश्चन मैं देता हूं. क्वेश्चन ये है कि आई हैव अपॉइंटेड अ सेल्स एजेंट इन जर्मनी and that German guy is helping me in making sales in the entire European region. Now I am paying him the commission. I am paying the commission to the German non-resident. Matlab, he's a resident of Germany, non-resident from India perspective, for effecting sales outside India. I am paying him the commission. So whether this transaction is taxable under the act or not, आप please chat box में type करिए whether this transaction is taxable under the act or not. We are very clear. I think hats off to all of you. आप सब सबसे पहले तो जगे हुए हैं और सेशन देख रहे हैं, ऐसे नहीं कि ऑनलाइन शुरू करके बंद कर दिया हो. एंड अभी तक जितने आंसर आए हैं आप सबका आंसर सही है. द ट्रांजैक्शन इज नॉट टैक्सेबल अंडर द एक्ट. नाउ व्हेन ट्रांजैक्शन इज नॉट टैक्सेबल अंडर द एक्ट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग द ट्रीटी बेनिफिट. तो अगेन हमें TRC, 10F और PAN परमानेंट अकाउंट नंबर की जरूरत नहीं है. आप उसको पेमेंट रेमिट कर सकते हैं. 15 CB में आप लिख सकते हैं ट्रांजैक्शन इज नॉट टैक्सेबल अंडर द एक्ट. नाउ सेकंड सिनेरियो क्या होगा कि ट्रांजैक्शन इज टैक्सेबल अंडर द एक्ट बट इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द DTA. ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हमें कहीं ना कहीं ट्रीटी का बेनिफिट चाहिए. एंड इफ वी नीड ट्रीटी बेनिफिट, व्हाट वी नीड फॉर्म 10F, वी नीड TRC, करेक्ट,
एंड परमानेंट अकाउंट नंबर। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर, हम माइक्रोसॉफ्ट का हमने लाइसेंस ले लिया, वी आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर। फर्स्ट सिनेरियो से बाहर आ गए, नेक्स्ट सिनेरियो का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुने। क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली केस है। हम उसको सॉफ्टवेयर की पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड कर लिया, हम सॉफ्टवेयर की पेमेंट कर रहे हैं। अब उसमें सिंगापुर डीटीए लगा हुआ है या कोई फॉरेन डीटीए लगा हुआ है, इट्स अ वेरी फेमस जजमेंट। मेरा आपसे क्वेश्चन है वेदर दिस ट्रांजैक्शन पेमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज टैक्सेबल अंडर द एक्ट और नॉट, एंड वेदर दिस इज टैक्सेबल अंडर द डीटीए और नॉट। तो आप क्या करिए, एक्ट में टैक्सेबल है तो लिखिए एक्ट और डैश करके लिख दीजिए यस और नो। अगर डीटीए में आपको आंसर देना तो लिखिए डीटीए यस और नो। Thank you, sir. Most of you have very correct understanding that the payment for the software would generally be taxable under the Act. And if I go by the judgment of the Honorable Supreme Court in the matter of Engineering Analysis Center of Excellence Private Limited, then generally the payment by end user for the software would not be taxable under the treaty. Now, this transaction is taxable under the Act, but not taxable under the treaty. तो क्या करेंगे? अब उसको ट्रीटी का बेनिफिट देना है, वो झगड़ रहा होगा आपसे कि यार ये तो ट्रीटी में टैक्सेबल नहीं है, आप मेरा टीडीएस क्यों काट रहे हो? उसको बोलेंगे भाई पहले ट्रीटी तुझे घूमनी है तो पहले वीजा दिखा। वीजा मतलब टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट आ गया, ये लो जी सर टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। अरे भाई फॉर्म 10F दे दो, ठीक है 10F तो सर पहले तो हम मेल पे दे देते थे, अब मेल नहीं, आपको ऑनलाइन फाइल करना पड़ेगा, आपको परमानेंट अकाउंट लेना पड़ेगा, तभी हम आपको अलाउ करेंगे ट्रीटी बेनिफिट। अगर आपका नॉन रेजिडेंट का ये वाला मैटर है और आप आज बिना फॉर्म 10F के पेमेंट कर रहे हैं, बिना टीआरसी के पेमेंट कर रहे हैं, देन यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन अ डेंजर पोजीशन, क्योंकि हम उसको ट्रीटी बेनिफिट दे ही नहीं सकते। तो उस नॉन रेजिडेंट को परमानेंट अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर लेगा, फिर वो अपने कोई ना कोई सिग्नेटरी अपॉइंट करेगा, फिर वो 10F ऑनलाइन फाइल करेगा और फिर आप उसको बेनिफिट दे पाएंगे। लेट्स टेक अनदर केस। नाउ सिनेरियो नंबर 3, we have taken a loan in 2018 or 19 from a non-resident, and we are making a payment of interest to such non-resident. The rate of tax, it falls under section 194 LC, and the rate of tax under LC read with 115A is 5%, whereas under treaty it is 10%. तो क्या करेंगे? आप ट्रीटी का बेनिफिट लेना चाहेंगे? आंसर इज नो। अगर आप ट्रीटी का बेनिफिट ही नहीं लेना चाहते तो क्या आपको टीआरसी चाहिए? नहीं चाहिए। आपको 10F चाहिए? नहीं चाहिए। आपको पैन चाहिए? नहीं चाहिए। तो आप एक्ट में टीडीएस काट के जमा करा दीजिए, कोई टेंशन ही नहीं है। Now, there could be the fourth scenario. Fourth scenario में transaction is taxable under both act and the treaty, but there is a difference of rate, and the difference of rate is act में it is let's say 10% plus surcharge, whereas in DTA it is only 10%. There is no surcharge in the DTA. तो वहां पे आपका क्लाइंट कह सकता है कि यार I want to take the benefit of the DTA. If he wishes to take the benefit of the DTA, then he needs to have 10F form TRC, and that TRC needs to be filed online. तो PAN number भी होना चाहिए। But if he says कि नहीं नहीं सरचार्ज काट लो यार, मुझे इंडिया में कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराना, पंगे होते हैं, तो आप उसका 10% प्लस सरचार्ज काट दीजिए और उसकी रिटर्न जमा करा दीजिए, वो TDS काट के 15C भी इशू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Hope we are clear on form 10F. आपका किसी का कोई क्वेश्चन Q&A में हो? नहीं, बहुत बढ़िया गौरव जी, आपने 4 एग्जांपल देखे तो क्वेश्चन लेस है।
थैंक यू सर। पंकज जी का क्वेश्चन आया हुआ, फॉर्म 10F रिसीव्ड इन फिजिकल फॉर्म बिफोर 16 जुलाई 2022 देन ऑनलाइन फॉर्म 10F इज मैंडेटरी आफ्टर। पंकज, आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है एंड आई मस्ट अप्रिशिएट योर क्वेश्चन एंड देयर इज नो क्लियर कट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इफ यू आस्क माय व्यू, देन अगर कोई ट्रांजैक्शन मेरी ऑलरेडी हो चुकी और उसमें मुझे 10F हार्ड कॉपी में पहले मिल चुका, then I think I have complied with the law. But the challenge is कि रिटर्न अभी फाइल नहीं हुई, रिटर्न होनी है बाद में फाइल। So there are two incidents. One is आप TDS काट रहे हो, तो TDS में you can still take the position का भाई मैंने तो पेमेंट ऑलरेडी करा चुका, अब पेमेंट मैंने ऑलरेडी कर दिया, तब जो लॉ था मैंने वो लॉ फॉलो कर लिया। अब नॉन रेजिडेंट को मान लीजिए इंडिया में रिटर्न फाइल करनी है, तो अब 10F उसके लिए मैंडेटरी हो गया है। तो we would take a conservative position that because you need to file return in India and the return needs to be filed post the notification number 3 of 2022, and hence one should file form 10F online. अब पूछ रहे होंगे सर कि भाई ट्रीटी बेनिफिट तो ले लिया, अब रिटर्न फाइल करनी क्यों जरूरी है? सर, ट्रीटी बेनिफिट आप कहाँ क्लेम करेंगे? From where you would be claiming the treaty benefit? You would be claiming the treaty benefit in the return. जब तक आप भारत सरकार को नहीं बताओगे कि यार मैं इस क्लॉज, इस सेक्शन में जा रहा हूँ, ये अब रिटर्न फॉर्म भी देखें तो रिटर्न फॉर्म में भी मॉडिफिकेशंस हो गए हैं कि एग्जाम्पशन का एक फॉर्म, एक नया वो आ गया है ब्लॉक, जहाँ पे इफ इनकम इज एग्जाम्प्ट अंडर द DTA आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी नॉन रेजिडेंट को, और नॉन रेजिडेंट को फिर पैन भी लेना पड़ेगा और 10F भी अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। चंद्रकांत, आई थिंक पंकज भाई आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। सो फ्रॉम अ पेयर पर्सपेक्टिव, अगर आपने प्री जुलाई पेमेंट कर दी तो कोई टेंशन नहीं है, बट इफ इट इज अ कंटिन्यूइंग ट्रांजैक्शन, माय एडवाइस इज गो फॉर अ फॉर्म 10F ऑनलाइन। Now your चंद्रकांत जी पूछ रहे हैं सर इट इज डिफिकल्ट टू गेट इट। मुझे नहीं पता भाई क्या डिफिकल्ट आप कह रहे हैं। फॉर्म 10F तो इजी होता है, ऑनलाइन होता है, कुछ खास इंफॉर्मेशन उसमें होती नहीं। बट यस, इफ यू टॉक अबाउट परमानेंट अकाउंट नंबर, वो भी इजीली मिल जाता है, उसमें भी कोई टेंशन होती नहीं। तो द ओनली थिंग इज कि क्लाइंट को लगता है थोड़ी परेशानी है, हम पैन अप्लाई करेंगे, फिर पैन के लिए अपनी रिक्वायरमेंट होती है, नोटराइज्ड पेपर आने चाहिए, अपोस्टाइल पेपर आने चाहिए, इंडिया में साइनिंग अथॉरिटी किसको बनाएंगे, बैंक अकाउंट खोलें नहीं खोलें, सो देयर आर लॉट ऑफ हैसल्स। तो इसलिए क्लाइंट ट्राई टू अवॉइड ऑल दिस स्टफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ब्रिजेश सुराना जी। वन ऑफ आवर क्लाइंट, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछें, कृपया अपने क्लाइंट का नाम डिस्क्लोज ना करें। अगर आप क्लाइंट का नाम डिस्क्लोज करेंगे तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा। ब्रिजेश जी पूछते हैं, वन ऑफ आवर client is exporting agriculture producers like grapes to France. An agency there is selling the goods and remitting the amount to India after deducting all the charges like commission, packing, storage, that. ब्रिजेश जी, मैंने यही एग्जाम्पल लिया था और बहुत सारे मेंबर्स ने बहुत करेक्ट आंसर दिया। इफ सेल्स आर इफेक्टेड आउटसाइड इंडिया and you are paying commission for that purpose, it is not taxable under the act and there is no TDS implication. I hope I have answered your question, Brijesh ji. Yes, yes. Thank you. चंद्रकांत जी का दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, नॉन रेजिडेंट डोंट वांट टू टेक पैन। ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, वो पैन नहीं लेना चाहते, बट कानून तो कानून है। अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग अलाउड नहीं है तो अलाउड नहीं है, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस तो लेना पड़ेगा। तो भारत में काम करना है, भारत से कमा रहे हो और भारत में आप अपने आप को रजिस्टर भी नहीं कराना चाह रहे, तो दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा अपने क्लाइंट को समझाएं कि देयर इज नो प्रॉब्लम इन टेकिंग अ परमानेंट अकाउंट नंबर। मनीष जी, सर मनीष जी ने बॉम्बे से ज्वाइन किया है हमें। मनीष जोशी जी का क्वेश्चन है, इफ TRC कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म नंबर 10F देन इज नॉट फॉर्म 10F नॉट मैंडेटरी। बिल्कुल मनीष भाई, वेरी यू हैव एडेड वन अनदर पर्सपेक्टिव। फ्रेंड्स, वी हैव रूल 21AB सब रूल 2। रूल 21AB सब रूल 2 क्या कहता है कि अगर टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट में जो भी इंफॉर्मेशन 10F के लिए चाहिए वो सारी मेंशन्ड है, तो आपको फॉर्म 10F की जरूरत नहीं है। सो देयर कुड बी अनदर सिनेरियो
कि आप ट्रीटी बेनिफिट लेना चाह रहे हैं बट आपका टीआरसी काफी डिस्क्रिप्टिव है, उसमें आपका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो भी है, आपकी ईमेल आईडी, ईयर, देयर आर 4-5 इंफॉर्मेशन विच आर रिक्वायर्ड. अगर वो इंफॉर्मेशन टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट में मेंशन है, देन यू डू नॉट नीड फॉर्म 10F. वेरी करेक्ट. थैंक यू मनीष भाई, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम मुंबई. Then we have another question coming up from Amit Azad ji. If I have to pay a referral commission outside India for a client referred to in India, do I have to deduct TDS on the referral fee to be paid? Amit ji, just give me a moment. We're going to take up this question. Sir, any other question or shall I proceed? Shall I proceed, Brishesh ji? हाँ जी, बिल्कुल. few question आ चुके हैं, आपने last question handle कर लिया है. So now let me move ahead. ये छोड़ देते हैं, इस पे आ जाते हैं सीधा. So scope of taxation in case of non-resident, section 5 subsection 2, subject to the provision of this act, the total income of any previous year of a person who is a non-resident includes all income from whatever sources derived which is received or is deemed to be received in India, that is section 7, deemed to be received in India, generally pension section 7 में cover होती हैं. In such a year by or on behalf of such person or accrue or arises or is deemed to accrue or arise in section 9, this we have already discussed. तो इसमें जो एक दो, अब हम यहाँ पे जो अमित जी ने क्वेश्चन लिया था कि अगर वो कमीशन पे कर रहे हैं फॉर द सेल्स इफेक्टेड इन इंडिया, तो उस केस में क्या करेंगे कि टीडीएस काटेंगे नहीं काटेंगे. तो अमित जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि वो कमीशन कहाँ अक्रू हुआ. It has been accrued for the sales effective in India. So the commission is very well linked to India, and accordingly, the income becomes taxable in India. It is accrued in India. The income becomes taxable in India, and the TDS should be deducted. So question आता है received in India का मतलब क्या है? Because you may find that your friends are working abroad, but they do have a bank account in India in which they are receiving the money. So does it mean that income becomes taxable in India? What is your view? Please share your answer in a chat box. If you are making a payment, if your friend is working outside India, but he has got salary account in India and he is receiving salary in India, whether it becomes taxable in India? कोई और आंसर, या सब आप बाकी चाय पकौड़ों में बिजी हो गए हैं शाम के? सर, इसमें we have explanation 2 which says, for the removal of doubt, it is hereby declared that the income which has been included in the total income of a person on the basis that it has accrued or arisen or is deemed to accrue or arisen to him shall not be against included on the basis that it is received or deemed to be received in India. अब sir, इसको ना, there are one very beautiful judgment in the matter of Arvind Singh Chauhan, and also we have a circular number 13 and 17 of 2017. तो मैटर क्या था, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि यार जब आपने एक्टिविटीज बाहर करी, आपकी इनकम अक्रू बाहर हो गई, आपको वो बाहर ही रिसीव हो गई. रिसीव का मतलब ये नहीं कि आपके पैसा आपके हाथ में आना चाहिए या आपके बैंक अकाउंट में आना चाहिए. रिसीव का मतलब ये है कि अब आपकी डायरेक्शन के हिसाब से पैसा इधर उधर जा रहा है. सो नाउ इफ योर एम्प्लॉयर has credited that money in India based on your direction, then technically you received the money outside India. यहाँ पे तो it is only credit, it is only credited in India, and thus it would not be regarded as received in India and it would not become taxable in India. We have a circular also, sir, आप circular देखिए, circular number 13 and 17 of 2017 in case of merchanting friends working on the merchanting ship. It is hereby clarified that salary accrued to a non-resident seafarers for services rendered outside India on a foreign going ship with Indian flag or foreign flag shall not be included in the total income merely because the said salary has been credited
in the non-resident external account maintained with an Indian bank by the seafarers. Are we clear on this? Yes. Any other question? Okay, so now let me proceed. Friends, if you have, we are receiving the questions. Thanks, Amit ji. Preksha ji will come to your question. Just allow me some moment. मैंने वो जो आंसर कर दिए मैं उनको क्लोज कर दूं एक बार. अच्छा, ये भी एक कई बार क्वेश्चन आता है. Someone came to me. One non-resident came to us and he was into preaching and teaching. तो क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह ले ली. अब टैक्स ऑफिसर ने एडिशन ठोक दी. टैक्स ऑफिसर ने कहा भाई आप अपने सोर्सेज मुझे बताइए. ठीक है, आपके इनकम के सोर्सेज क्या हैं. And the client from inside gave the sources or disclosed the sources. But being he was non-resident, he was not disclosing too much sources. वो थोड़ा अपने स्टाइल में, थोड़ा limited form में उन्होंने बताया. But officer never listened and he created the addition. He said section 68 is applicable, and being you are not able to prove the sources of funds for buying property in India, I would be doing the addition. अब सेक्शन 68 विद सेक्शन 5 का क्वेश्चन है. अब मान लीजिए किसी नॉन रेजिडेंट ने अपना इनकम, अपना सोर्स डिस्क्लोज नहीं किया या ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं किया. कैन सेक्शन 68, अगेन मैं चैट बॉक्स में आप सबके रिप्लाई चाहूंगा, कैन सेक्शन 68 ओवरराइड सेक्शन 5? Can section 68 override section 5? दोस्तों, I hope you are clear on the question. Please अपना आंसर टाइप करें. In the meantime, मैं लिंक भी शेयर कर लेता हूं. मैंने कुछ पेमेंट डिटेल डाल दी है. आंसर इज, कुछ फ्रेंड्स ने रिप्लाई करा है. संजीव जी, एवरीवन इज सेइंग नो. आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नो. सेक्शन 68 कैन नॉट ओवरराइड सेक्शन 5. तो जहां पे जब तक इनकम इज accrue or deemed to accrue in India, whether मतलब then income received or deemed to be received in India in case of non-resident, the income would not become taxable in India. ठीक है, थैंक यू सर. अच्छा, मैंने आप सबको लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है फॉर द 2 days कॉन्फ्रेंस दैट वी आर डूइंग. आप उस पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. नाउ लेट मी प्रोसीड विद माय स्लाइड. आप केस लॉज मत लिखिएगा, यू विल गेट दी स्लाइड्स. मैं सर को, ब्रिजेश सर को या मित्तल सर को दे दूंगा एंड दे वुड बी सर्कुलेटिंग दी स्लाइड्स विद यू. व्हाट आर दी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज? ओपिनियन ऑन टैक्स विदहोल्डिंग अंडर सेक्शन 195. मोस्ट ऑफ अस, जब हम नॉन रेजिडेंट की बात करते हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन की बात करते हैं, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 195. कोई ना कोई आपका फ्रेंड, आपका क्लाइंट आपके पास आता है, कहता है कि जी मुझे नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करनी है और बैंक वाले 15 CB मांग रहे हैं, तो क्या आप 15 CB देंगे? और वहां से हमारी, मोस्ट ऑफ अस, हमारी जर्नी शुरू होती है फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन. फिर उसको समझने के लिए हम यूट्यूब पे जाते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, सेशंस अटेंड करते हैं और व्हाट्सएप पे टाइप करते हैं. मैं देखो बहुत दिल से आप सबको बता रहा हूँ, एकदम सच्ची घटना बता रहा हूँ. हम में से काफी लोग बुक्स पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं. तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बुक्स पे इन्वेस्ट करें. मतलब वे बैक व्हेन आई लेफ्ट डेलॉयट एंड स्टार्टेड माय ओन, तो आई बॉट अ बुक ऑन इंटरनेशनल टैक्स. तब उसकी कॉस्ट शायद कुछ 6-7,000 थी की बुक थी वो. क्लॉस वॉगल साहब की बुक थी ऑन नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन. आई वेंट थ्रू द सेम. उससे मैंने पता नहीं कितनी ओपिनियन दे दी.
I don't remember कहाँ सेशंस दे दिए, कितना ज्ञान बांट दिया, कितना ज्ञान ले लिया। तो जो आज मेरी नॉन रेजिडेंट की प्रैक्टिस है, बिकॉज माय करियर स्टार्टेड इन ट्रांसफर प्राइसिंग, so whatever I am doing in non-resident taxation, international taxation, the journey goes back to buying that book, Klaus Vogel. तो आपको गौरव जी बुक सजेस्ट आप बताएं कौन कौन सी बुक्स? सर क्लॉस फॉरेन ऑथर्स में फिलिप बेकर हैं, क्लॉस वॉगल हैं, और इंडियन बुक्स में मुझे लगता है चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट का सेट आता है ऑन इंटरनेशनल टैक्स। आई थिंक इट्स अ वेरी वेल ऑथर्ड बुक, वेरी डिटेल्ड, वो जरूर लें इफ यू चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल टैक्स, चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट, सॉरी, चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स बॉम्बे की इंटरनेशनल टैक्स पे बुक है। सो दे हैव गॉट देयर आर 3 बुक्स इन दैट सेट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप उसको जरूर लें। इट इज पब्लिश्ड बाय टैक्समैन। अब आप ये बता दीजिए आप अपनी बुक कब निकाल रहे हैं? सो मैंने राइटिंग में थोड़ा पुअर हूँ क्योंकि 18 साल आपकी प्रैक्टिस के सुपर प्रैक्टिस के हो गए, यू वन ऑफ द लीडर प्रैक्टिशनर इन दिस नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन। ऐसा नहीं है, प्रोबेबली मैं थोड़ा सा आपको इसमें कह सकता हूँ, आपकी अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसको वीडियो में रिकॉर्ड कर लीजिए एंड देन टेक ए हेल्प ऑफ अ ऑथर। बहुत सारे मार्केट में ऑथर हैं, दे विल राइट द बुक फॉर यू। श्योर सर, श्योर, थैंक यू सर। प्रोबेबली बुक लिखने के लिए मुझे NIRC छोड़नी पड़ेगी सर। नहीं आप वो करिए, आप लेक्चर जो आपके मन में आते हैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करिए। ठीक है सर, ठीक है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन इंटरनेशनल टैक्सेशन, अपने लिए बुक्स जरूर बाय करें और पढ़े जरूर। मैं आज भी आपने बताया चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट मुंबई की इंटरनेशनल टैक्स, और दूसरी सर 2 फॉरेन ऑथर्स हैं, क्लॉस वॉगल साहब हैं और एक फिलिप बेकर जी हैं। तो इनकी भी बुक्स आती हैं, थोड़ी कॉस्टली होती हैं। सो यू कैन स्टार्ट विद चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट बुक ऑन इंटरनेशनल कंपेंडियम है, शायद समवन हैज रोट ऑन द चैट बॉक्स, आई थिंक दैट इज द नेम, इंटरनेशनल टैक्सेशन अ कंपेंडियम, आई थिंक वेरी वेल। तो चंदन जी ने तो लिंक भी शेयर कर दिया है, तो थैंक यू चंदन। और सेकेंडली बुक सिर्फ खरीदनी नहीं है, उसको पढ़ना भी है। तो जैसे डेली स्विमिंग करने से आपकी स्विमिंग इंप्रूव हो जाती है, ऐसे ही रेगुलर पढ़ने से आपके कंसेप्ट्स और टैक्स इंप्रूव हो जाएगा। आज भी मैं कोशिश करता हूँ अपनी हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स या 1 आवर रीडिंग को दूं बियॉन्ड व्हाट आई रीड ऑन क्लाइंट फॉर क्लाइंट ओपिनियंस। तो ये जो मैं आधा पौना 1 घंटा पढ़ता हूँ, इसमें कोई क्लाइंट ओपिनियन का काम नहीं होता, कुछ नहीं होता है, मैं बस अपने लिए पढ़ रहा होता हूँ। और क्लाइंट ओपिनियन के लिए तो या लिटिगेशन के लिए तो जो पढ़ता हूँ उसका तो क्वांटम ही अलग है। Then when you issue a 15 CB, it is not only a certificate, it should be seen as the opinion, because वो क्रक्स है कि ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है या नहीं है, कौन से क्लॉज में है। So it is not only selecting the clause, it is actually selecting the clause, and you select the clause, you select the section once you have the thorough knowledge of the subject। वहां हो सकता है आपको 1 मिनट लगे, 30 सेकंड लगे वो सिलेक्ट करने में, but before that 30 second you took decision in that 30 second or a 1 minute, you must have invested maybe 10 hours or maybe 100 hours to get the grip on the subject. So value your time which you are investing on issuing the 15 CB. Then you can apply for application of for lower withholding certificate. I know one of my friend who is in Gurgaon, उनकी मेजर प्रैक्टिस 197 की है। कैन यू बिलीव इट? मेजर प्रैक्टिस 197 सर्टिफिकेट की है। वो जो गुड़गांव में डील्स होती हैं, लैंड डील्स होती हैं बाय सेल की, उनमें लोअर विद होल्डिंग सर्टिफिकेट दिलाते हैं वो। Then consequences for the business: banks will not allow payment without certificate under form 15 CB if it is taxable or if it is falling within their norms. There could be disallowance of an expenditure, there could be tax demand, there could be penalty. So section 195 is pretty important section, and I said earlier, our trade, our international trade is increasing, and this is where the cream lies. You should all work on international tax, and there is a big scope. There is no competition. We need experts. So if you are investing time, take my words, you will become, you will have a demand in the market. ऑब्जेक्टिव छोड़ देते हैं, इसको कोई फायदा नहीं है सेक्शन 195 का। नाउ द सेक्शंस अराउंड सेक्शन 195,
Section 4, Section 5, we have already discussed. Section 9, we have briefly discussed. We'll take a more example to understand what is there in Section 9 as we'll proceed. Then we have Section 197 on the lower withholding, and then we have interest and penalty under Section 201, 1A, 206 AA is the higher rate of tax which is applicable if PAN is not there. So इसको भी एक बार समझ लेते हैं. अच्छा 201 की भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियोस चल रहे हैं आजकल. If you see the assessment under section 201 for TDS is increasing. तो अगर आपने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करा है without deducting a TDS, and if the payment is in the nature of royalty or services, specifically services, we are receiving notices from the department that why you have not deducted the TDS, and they are raising the demand of interest and penalty under 201, and then also you are getting 148 notice. 148A, 148, 147, all that stuff is happening. फिर the disallowance का भी issue हो रहा है. तो this is the upcoming area of litigation. पहले भी था, but now the cases are rising. So and very importantly, I have seen the recent trend. What they are doing, they are asking the chartered accountant who has issued the 15 CB, and they are asking why he has given the nil withholding certificate, that there should not be any TDS. So my friends, if you are issuing 15 CB and you are saying there should not be any TDS, have your papers ready before issuing that why you are saying TDS is not applicable, because you may receive some notice from the department someday and they may inquire about the facts. They may inquire you कि भाई क्यों नहीं करा, तो वो अपनी तैयारी करके रखिए. क्लाइंट के हिसाब से मत चलिए कि टैक्सेबल नहीं है. सर पिछले सीए ने भी कहा था कि टैक्सेबल नहीं है, हो सकता है पुराना कानून कुछ और हो, अब कानून कुछ और है, तो आप देख के करिए. Then within 195, we have 6 subsections, scope and conditions for the applicability in subsection 1. Then application by payer to the assessing officer in subsection 2. Then application by payee to the assessing officer in subsection 3. Then the certificates which are issued, they are the validity of those certificates under subsection 4. Power of the CBDT to issue notification under subsection 5, then furnishing of information by the payer, that is your 15 CB under subsection 6. But before I move forward, let me also clarify on 206 AA. 206 AA क्या कहता है कि if you are making payment to the resident or a non-resident, then the higher rate of TDS would be applicable. So my discussion is limited to non-resident. If you are making a payment to the non-resident, अब नॉन रेजिडेंट के केस में क्या होता है, पैन तो होता नहीं, जनरली पैन नहीं होता. अगर पैन है तो मैटरेंट्स, बट अगर पैन नहीं है, परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, तो क्वेश्चन होता है क्या मैं 20% रेट ऑफ टीडीएस लगाऊं. आई थिंक किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, मे बी इन अ चैट एंड नॉट इन द Q&A, कि क्या मैं 20% का रेट लगाऊं, because that is what 206 AA says. So we have rule 37BC, and rule 37BC and rule 21AB are independent. Means form 10F is independent of 206 AA. So rule 37BC says you are not in need of permanent account number for the non-resident if you have certain details. वो जो details हैं वो बड़ी basic सी हैं, उसका एड्रेस, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नाम, आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आप नॉन रेजिडेंट के लेटर हेड पे ले सकते हैं. आप उसके लेटर हेड पे ले लीजिए. आई थिंक दैट इज सफिशिएंट. प्लस अगर आपके पास टीआरसी हो, टीआरसी लेना पड़ेगा आपको, प्लस दैट इंफॉर्मेशन. वो दो चीजें अगर आपको दे देता है तो आपको पैन की जरूरत नहीं है. यू कम आउट फ्रॉम रूल सेक्शन 206 AA because of rule 37BC. Correct? But if you want treaty benefit, then you need form 10F. I think we are clear on this. यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन हो चैट बॉक्स में प्लीज डालिए, और Q&A में सॉरी डालिए प्लीज. If you have any question relating to this PAN aspect that I have discussed, if you have any question, feel free to share in Q&A. I think we do not have any question. Now,
हर्षद वैद्या जी का क्वेश्चन है, इफ आई एम्प्लॉई ऑफ अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी हैविंग work from home, working from India home, whether salary received in NRE account is taxable in India. I think very good question. इससे हमारे एक aspect cover हो जाएगा, आपको salaries clear हो जाएंगी. Section 9 says कि in case of, पहले तो ये बताइए हर्षद जी, whether your client is resident or non-resident. Harshada Vaidya ji, whether your client is resident or non-resident. So if he is resident, his income is taxable in India, certainly. The global income of resident is taxable in India. But if he is non-resident, then salary is taxable where the employment is exercised. And it is, same in the Act and the double taxation avoidance agreement. So whatever routes he wishes to take, whether the Act or the DTA. And exercise क्या होगा? Where the employment is exercised का मतलब क्या होता है? Where you are physically present while doing your job. So if your client, if your friend is physically present in India while doing his job, the income is taxable in India and not in Singapore. तो सिंगापुर में अगर वो टैक्स पे कर रहा है, so there could be a challenge कि tax authorities आपको जो टैक्स आपने सिंगापुर में पे किया उसका क्रेडिट अलाउड ना करे. Hope I am clear, because section 9 says it is taxable in India. Even the double taxation avoidance agreement gives the right of taxation to India and not to Singapore in this case. Thus there is a high risk that the credit of taxes paid in Singapore may not be allowed by Indian tax authorities. If he is non-resident, then the credit would be allowed in the Singapore and not in India. Hope I am clear, Harshad. If you have any question, please raise your hand and I will allow you to speak. Harshad Vaidya, hope I am clear. Can you please confirm in the chat box? I think non-resident stay in India. I think we have discussed this position, Harshad. Hope I am clear on this. Let me move forward. तृप्ति जी, क्वेश्चन तो हो गया, अब तो बहुत आगे निकल गए हम क्वेश्चन से, हम आगे चलते हैं. पंकज जी का क्वेश्चन है, सर, वन फॉरेन सप्लायर टू इंडियन एंटिटी प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर फॉरेन क्लाइंट ऑफ इंडिया, इंडियन एंटिटी अब्रॉड. पंकज जी लेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा टाइम दीजिए, विल टेक अप दिस क्वेश्चन. सर, इफ नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम हिज इंडियन अकाउंट टू हिज एनआरआई, कोई दिक्कत नहीं है तेजेश जी, इट इज नॉट. आप ये बताइए कि वेदर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि वेदर it is accrue or rising in India, but transfer ही तो है, कोई income थोड़ी ना. Income is taxable and not the transfer. The amount is not received in India. ठीक है, there should be an income, Tejesh ji. It is not taxable. Hope I am clear. I think Harshad said okay. Thank you, Harshad. Now, Chandu ji, can professional fee paid outside India be treated as FTS or fall under the other? FTS पे बड़े क्वेश्चन है आपके. We'll take up this FTS question. Where resident, देखिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, मैं जैसे जैसे चीजें कवर करता जा रहा हूँ, मैं वैसे वैसे क्वेश्चंस लेता जा रहा हूँ. जिन क्वेश्चंस को मैं नहीं ले रहा, मैं पूरी ट्राई मारूंगा, मैं ड्यूरिंग द सेशन उनको जरूर लूँ. Where resident takes benefit of DTA in case of foreign income, whether form 10F TR, नहीं. देखिए, रेजिडेंट को 10F और TRC सबमिट नहीं कर रहा, वो तो इंडिया का ही बंदा है, उसको थोड़ी ना कुछ प्रूव करना है. तो आप वो तो फिर हम रूल 128 पे जाएंगे, जो वहां के प्रोविजंस हैं क्रेडिट के, फॉरेन टैक्स क्रेडिट के, वो लगेंगे. तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट आज हम कवर नहीं कर रहे हैं चंदन जी. ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट का आपका क्वेश्चन है. इट हैज नथिंग टू डू विद फॉर्म 10F एंड TRC. सुरेश जी का क्वेश्चन है, विल इट मेक डिफरेंट इफ पर्सन वाज वर्किंग इन इंडिया ड्यू टू कोविड लाइक सिचुएशन अंडर कंपल्शन ड्यू टू फ्लाइट. सुरेश जी, एक ना नोटिफिकेशन आई थी भारत सरकार की, जहां पे भारत सरकार ने कुछ पीरियड के लिए अलाउ करा था, बट दैट इज अ वे बैक, मतलब इन 2021 और 20 दैट नोटिफिकेशन केम. तो उस नोटिफिकेशन की आज कोई रिलेवेंस नहीं है. फॉर दैट पीरियड इट वाज रिलेवेंट. दे अलाउड सर्टेन maybe from 10th March to 31st March they allowed कि अगर आप हो तो हम उस पीरियड को काउंट नहीं करेंगे for computing the residency, but now that is of no use.
सुरेश जी, अब क्या क्वेश्चन है आपका? दिस इज रिगार्डिंग सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया व्हाइल वर्किंग एट होम। सर, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया और इंडिया में काम कर रहे हो टैक्सेबल है सुरेश जी, डिस्कस ऑलरेडी, थैंक यू। हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, कुछ रह गए, आई विल टेक अप द FTS पे व्हेन आई विल कम, आई विल टेक अप द क्वेश्चन, नो इश्यूज। नाउ विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड, प्लीज। Now what section 195(1) says, any person responsible for paying to a non-resident any interest not being interest referred to in section 194 LB, LC, LD, or any other sum chargeable under the provision of this act, not being income chargeable under the head salaries, shall at the time of credit or of such income to the account of pay or at the time of payment thereof in cash or by issue of check or draft or by any other mode, whichever is earlier, deduct income tax thereon at the rate in force. See, ये जो last, second to last bullet है, it is very important. I will come to the upper bullets later on. पहले वाला discuss कर लेते हैं. अब देखिए कि TDS की applicability कब है? When the first instance has been made, आपने पेमेंट दे दी, क्रेडिट कर दिया, चेक इशू कर दिया, बुक में रिकॉर्ड कर लिया, whatever happens first, and not at the time of issuance of 15 CB. आप 15 CB इशू करते हुए क्या लॉ है वो नहीं देखेंगे. जब TDS एप्लीकेबल था तब क्या लॉ था तब देखेंगे. तब आपके पास डॉक्यूमेंट्स थे या नहीं थे. प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं, दैट इज अ सेपरेट मैटर. बट एज पर द लॉ, when the guy booked the TDS, whether he was having TRC, whether he was having 10F, था या नहीं था. अगर था तो फिर आप उसको ट्रीटी का बेनिफिट दीजिए, TDS ट्रीटी के हिसाब से काटिए. अगर TDS बुक करते हुए, अमाउंट एक्सपेंस बुक करते हुए आपके पास 10F और TRC नहीं थे, तो फिर आप ट्रीटी का बेनिफिट नहीं देंगे. तो आपको इंश्योर करना है कि जो टैक्स है वो एज पर द एक्ट डिडक्ट हुआ. अब उसने बुक कर लिया अप्रैल में, पेमेंट करने आया वो सितंबर में, दिसंबर में, और वो नवंबर में टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट देता है आपको, 10F नवंबर में फाइल होता है. देन फ्रेंड, देयर इज अ चैलेंज, क्योंकि उस वक्त क्या लॉ था वो देखना है. करेक्ट. बट वो कहता है जी मेरा अप्रैल का है, अप्रैल में मैंने बुक कर दिया, तब उन्होंने मुझे 10F दे दिया था हार्ड कॉपी में. आई थिंक देन यू कैन से चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ. So important point to take home is that you need to see the law at the time of whichever is earlier, whether credit, booking, payment, whatever is earlier. Now, it is applicable when any other sum chargeable under the provision of this act. So if the income is not taxable under the act, then it is not, TDS is not applicable. And section 195 comes afterward, so we have section 5, we have section 9, then we have section 90, and then we have section 195. So जब तक हम 195 में पहुंचे, हमने 90 को ऑलरेडी टेक केयर कर लिया. अब 90 में ऑलरेडी हमने उसको DTA का बेनिफिट दे दिया, whichever is more beneficial. तो उसके बाद हम 195 में आएंगे. So after giving the DTA benefit, if the income is chargeable to tax in India, then only TDS is applicable, otherwise it is not taxable. Explanation 2 clarifies that the provision of this section are also applicable wherein payer is non-resident. So if a transaction is between two non-residents, then also if the income is taxable in India, then also TDS would be applicable. For example, one non-resident transfers the share of Indian company to another non-resident, transaction is applicable, TDS is applicable. The another example could be, let's say you have a permanent establishment in India, and that permanent establishment, renders, make some payment to another non-resident, let's say based out of US for some fee for technical services, then it's a payment from non-resident to non-resident, and section 195 would be applicable. सर ये चैट बॉक्स में क्वेश्चन वो आया है, कोई विशाल शाह है, वो मीटिंग के बाहर चले गए, वापस आना चाह रहे हैं तो उनको आने नहीं दिया जा रहा, कुछ इंटरनेट का इशू है. तो एक बार मेरी एडमिन से रिक्वेस्ट है, देख लें इस इशू को.
और लक्ष्मी जी आप जरा देखिए वेबिनार। सर मैं कर देती हूँ। हाँ इनको कर दीजिए। Now we have subsection 2 also. Subsection 2 is important and we will come to the question also. So subsection 1 देखिए कहता है any other sum chargeable under the provision of this act. Subsection 2 also talks about the same thing. Any such sum chargeable under this act, whole of such sum. तो question जो है ना मतलब let me straight away come to the question and then you would be able to appreciate. Question is, and let's see what answer you have to say on this. Question is कि ब्रिजेश जी नॉन रेजिडेंट वैसे लगते हैं, फ्रेंच वगैरह रखी हुई है सर ने। सर माफी चाहूंगा थोड़ा मजाक करने के लिए। सो अब सर क्या है, नॉन रेजिडेंट हो गए हैं और सर की प्रॉपर्टी है दिल्ली में पूसा रोड में। अब सर उसको बेचना चाह रहे हैं एंड मोहन जी खरीद रहे हैं। अब दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों एक इक्विटेबल पोजीशन चाहते हैं। तो मोहन जी कह रहे हैं भाई टीडीएस में पूरे अमाउंट पे काटूं। मान लीजिए प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी की वैल्यू इज 5 CR एंड ब्रिजेश जी का कैपिटल गेन 2 CR का है। ये ऑन रिकॉर्ड पेपर से अवेलेबल है। तो क्वेश्चन जो मोहन जी के सामने, मित्तल सर के सामने है, वो क्वेश्चन ये है कि भाई 5 करोड़ पे टीडीएस काटा जाए या 2 करोड़ पे काटा जाए, ऑन द एंटायर कंसिडरेशन या ओनली ऑन द कैपिटल गेन। आई थिंक यू ऑल आर क्लियर। अब आप प्लीज राइट योर आंसर इन दी चैट बॉक्स। So we have 1 transaction value. Okay. I think most of us believe कि transaction value पे TDS कटना चाहिए, but we have few friends who are saying कि capital gain पे TDS deduct होना चाहिए. It's a tough competition which is going on. ब्रिजेश जी आपकी क्या राय है? आपका क्योंकि TDS कट रहा है, तो आप इमोशनली होके इमोशन के साथ आंसर देना चाहेंगे या विदाउट इमोशन, विदाउट देखिए टीडीएस तो जो वैल्यू है उसी पे कटेगा, टोटल वैल्यू पे 5 करोड़ पे। तो आपके फ्रेंड से भी पूछे, मोहन सर से भी पूछे उनका क्या व्यू है, बट आई थिंक मोहन सर शायद अवेलेबल ना हो। मोहन सर, आर यू देयर? आई थिंक ही इज नॉट अवेलेबल। सो लेट्स प्रोसीड एंड लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। इन द मीन टाइम जिन दोस्तों ने आंसर नहीं करा है वो आंसर करते रहे। ये कौन बनेगा करोड़पति का मंच नहीं है कि आप कुछ नुकसान हो जाएगा, आपके आंसर से आपका ही फायदा होगा। आप कभी भी काम शुरू करेंगे तो लर्निंग तो चाहिए। So these are the judgments. हम सीधा important judgment पे चलते हैं। जी इंडिया टेक्नोलॉजी, the obligation to deduct tax at source is however limited to the appropriate proportion of income chargeable under the act, forming part of the gross sum of money payable to the non-resident. This obligation being limited to the appropriate proportion of the income flows from the word used in section 195, namely chargeable under the provision of the act. So what is chargeable under the provision of the act, sir? 5 crore or 2 crore? What is chargeable under the provision of this act? 5 crores or 2 crores? 2 crores. So this is what G India says. The obligation to deduct tax at source is however limited to the appropriate proportion of income chargeable under the act, forming part of the gross sum of money payable to the non-resident. This obligation being limited to the appropriate proportion of income flows from the word used in section 195, namely chargeable under the provision of the act. The application of section 195 subsection 2 presupposes that the person responsible for making the payment to the non-resident is in no doubt that tax is payable in respect of some part of the amount to be remitted to a non-resident, but is not sure as to what should be the portion so taxable, or is not sure as to the amount of tax to be deducted. Basically 195(2) में क्या है, जो पेयर होता है वो एप्लीकेशन करता है ऑफिसर को कि भैया मुझे बताओ कितना टैक्स काटूं,
तो क्वेश्चन यहाँ है कि वो एप्लीकेशन कब करेगा। तो उसको ये तो पता है मोहन जी को कि भाई 5 करोड़ पे नहीं कटना, बट 2 पे काटूं, 3 पे काटूं, 4 पे काटूं, मुझे नहीं पता। तो he will make an application to the officer for determining the amount on which tax should be deducted. But if you are sure, सर श्योर है, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीनियर मेंबर है, एक्सपीरियंस्ड है, और इनके बहुत सारे इंटेलिजेंट दोस्त हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, है ना, और हम सभी हैं, हम सबकी उनको जो भी कंफ्यूजन होता है पूछ लेते हैं। वैसे सर कंफ्यूजन के लिए कभी कॉल नहीं करते, कंफ्यूजन के लिए हमेशा मैं ही कॉल करता हूँ सर की गाइडेंस के लिए। तो अब सर इज वेरी क्लियर कि यार 2 करोड़ पे कटना चाहिए। तो जहां पे आप क्लियर हो कि इस अमाउंट पे डिडक्ट कटना चाहिए, वहां पे आप 195(2) में एप्लीकेशन नहीं फाइल करेंगे। अब इंस्ट्रक्शन नंबर 2 ऑफ 2014 भी देख लेते हैं, वो क्या कहता है। The assessing officer shall determine the appropriate proportion of the sum chargeable to tax as mentioned in subsection 1 of 195 to ascertain the tax liability on which deductor shall be deemed to be assessee in default. तो assessee in default भी किस पे मानेंगे? The portion which is chargeable to tax in India. तो आपको 5 करोड़ पे कभी भी assessee in default नहीं माना जाएगा, आपको assessee in default माना जाएगा जो इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स है, और वो 5 करोड़ नहीं है दोस्तों, वो 2 करोड़ है। अब ये एक ट्राइब्यूनल की जजमेंट है जो आपके फेवर में जाती है, ए मोहिद्दीन वर्सेस एडिशनल डीआईडी बैंगलोर। दे सेड द सेम स्टफ कि उसने तो इंटेलिजेंटली हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर दिया था, सेक्शन 54 का भी बेनिफिट ले लिया। तो ब्रिजेश सर ने एक प्रॉपर्टी बेची, दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, तो कहा कि भाई जितना गेन था वो सारा इन्वेस्ट हो गया, सारी कंसिडरेशन, बल्कि मैंने 1 करोड़ रुपए बढ़ा के नहीं प्रॉपर्टी ली, अब मैंने हॉस्कास में एक फ्लोर ले लिया है, तो अब तो बिल्कुल भी टैक्सेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। होप आई एम क्लियर ऑन दिस। आर वी क्लियर ऑन दिस एग्जांपल सर ब्रिजेश जी? Yes, yes. If anyone has any question on this aspect of 195, please share your example or please share your question. हरी जी मैंने कर लिया डिस्कस। अगर आप आपका क्वेश्चन है, प्लीज डिस्कस द कैपिटल गेन अक्रूड टू एनआरआई हु वांट्स टू टेक मनी आउट ऑफ इंडिया, एप्लीकेबिलिटी ऑफ 15 CB आल्सो डिस्कस्ड। मैंने डिस्कस बिल्कुल करी है सर। अगर इनकम टैक्सेबल है तो 15 CB तो आएगा ही आएगा। किस रेट पे टैक्स होना, किस इनकम पे टैक्स होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। नाउ क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या आता है कि यार मुझे उसके पेपर पे विश्वास नहीं है। सो इफ यू आर ऑन अ बायर साइड, अगर बाय कर रहे हैं और आपको 5 करोड़ रुपए देने हैं, देन टेक अ कंजर्वेटिव पोजीशन। इफ यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट, सब कुछ ठीक है, देन इट्स ओके, अदरवाइज अप्लाई 197 और 192(2). अगर एकदम पेपर से क्लियर आ रहा है कि नहीं जी गेन तो 2 करोड़ का ही बनना है, देन यू मे टेक अ पोजीशन कि मैं 2 करोड़ पे TDS काटूंगा। 15 CB इज सर्टेनली एप्लीकेबल, आप उस पे उसको 15 CB इशू करेंगे। बिना उसके तो बैंकर भी जाने नहीं देगा ना पेमेंट। Chandan Sahu ji, in the example, can the buyer believe in the CA certificate given by the seller? मुद्दा बड़ा है, आप डॉक्यूमेंट जरूर देखें। इतनी बड़ी रकम है और छोटे मोटा मतलब 1-2 लाख रुपए का गेन है तो मैटर अलग है, अगर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कम है तो बात अलग है। बट अगर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, कोई बायर 50 लाख 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, 2 करोड़ 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, there is no harm to hire a counsel who can verify the papers along with the CA certificate. मतलब I would like to take a conservative position. I would like to take a position which is more vetted by the lawyers or vetted by the chartered accountant, rather than leaving it up to the seller of buyer of the property. हरी जी सेम चीज है, शेयर्स हो कुछ भी हो, जो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है उसी पे TDS कटेगा। If हर्षद जी पूछ रहे हैं TDS to be deducted on 2 crore, then form 13 is required. सर ये सारे फॉर्म्स जितनी भी कंप्लायंसेस है वो तो करने ही पड़ेंगे आपको। अभिनंदन जी का क्वेश्चन है, सिंगापुर बेस्ड एंटिटी रेसेस इनवॉइस इन सिंगापुर। ये आई विल कम टू द सर्विसेज। अभी वी हैव जस्ट डिस्कस्ड कैपिटल गेन एस्पेक्ट 195 सबसेक्शन 2। आई थिंक वी आर क्लियर ऑन दीज क्वेश्चंस।
Now, with your permission, let me move forward. This is again a very interesting case study. A Dutch holding GmbH deputed Mr. Paul to Indian subsidiary Asia Manufacturing Private Limited based out of Faridabad, Haryana. Mr. Nitesh F&A Head has approached you to know the tax implication under Chapter 17B of the Act with regard to salary payment to Mr. Paul. So you will find that there are many cases जहाँ पे आप जो हैं देखेंगे कि the non-resident is there in India, correct? और वो इंडिया में है और सेकॉन्डमेंट पे है या डेप्यूटेशन पे है, तो क्वेश्चन आता है कि हम उसकी सैलरी पे जो हम उसको पे कर रहे हैं उस पे टीडीएस डिडक्ट करें या नहीं करें. तो आप लोगों के व्यू है, let's say the non-resident is working in India on a deputation or on a secondment, whether one should deduct the TDS or not. And if the TDS is deducted, then it should be deducted under section 192 or it should be deducted under 195. Sir, let me repeat my question. Let's say we have a holding company in Japan and we have a subsidiary company in India. The Japanese company deputes few Japanese in Indian company for 2 years. ठीक है, अब आप उन Japanese को सैलरी पे कर रहे हो. मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि 195 में टीडीएस काटूं या 192 में टीडीएस काटूं. मोर देन 1 में कह रहा हूं 2 साल है हर्षद जी, 2 years है. चंदन जी कह रहे हैं 195, पंकज जी कह रहे हैं 192. मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम मिक्स रिजल्ट है. जैसे आज एग्जिट पोल के रिजल्ट आ रहे थे, कभी कोई पार्टी ऊपर कभी कोई पार्टी नीचे. सर कैन वी, आप में से कोई अपनी राय रखना चाहेगा वर्बली? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप हैंड रेज करें एंड वी विल अलाउ यू टू स्पीक. प्लीज रेज योर हैंड. If you have some view to share on this aspect, please raise your hand. तरुण जी ने रेज करा है सर. तरुण पहले का उनका रेज है, पहले का है. तो मैं लोअर हैंड कर देता हूँ एंड लोकेश जी ने का भी पहले का ही लग रहा है. हाँ. आप में से कोई व्यू शेयर करना चाहेगा अपना इस पे कि whether the TDS should be deducted under 192 or it should be deducted under 195? Please raise your hand and I will allow you to speak. लेकिन कोई नहीं है. सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको थोड़े फैक्ट्स और इवैल्यूएट करने पड़ेंगे. एंड दोस फैक्ट्स आर, वी हैव अ जजमेंट by apex court in the matter of Morgan Stanley, and recently जीएसटी के मैटर में, सर्विस टैक्स के मैटर में अगेन एपेक्स कोर्ट की जजमेंट आई नदन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के केस में. दोनों जजमेंट में एक ही बात करी गई, मतलब एक इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से है, एक सर्विस टैक्स पर्सपेक्टिव से है, बट लाइन ऑफ थॉट सेम था. और वो ये था कि उन एम्प्लॉइज का लियन एंड कंट्रोल कहाँ पे है, वेदर दे हैव लियन एंड कंट्रोल इन इंडिया or their lien and control is outside India. What is lien and control? कि भाई उनकी सैलरी बढ़ाएगा कौन, किसके पास पावर है, उनको जॉब से निकाल कौन सकता है, उनके अप्रेजल कौन कर सकता है, जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में होता है. अगर आज मैं ब्रिजेश सर का एम्प्लॉय हूं तो ब्रिजेश सर विल टेक अ कॉल कि गौरव की सैलरी बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी, इसको नौकरी पे रखना है, इसको नौकरी से निकालना है. ब्रिजेश सर की कॉल है, वो मोहन सर से बार बार नहीं पूछेंगे कि यार क्या करना है बताओ, गौरव की सैलरी बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं, क्या करें. हाँ जी, तो हमारे पास सुरेश जी का हैंड रेज है. यस सुरेश जी, प्लीज शेयर योर विजडम. सुरेश जी. Sir, will it not contradict the section 6 in case, because you have said that they have been deputed in India for 2 years?
no doubt they will have a leaner controls with the holding company, but they will be considered as a resident in India after maybe complying the Section 6 as such. बिल्कुल सही सर, आपने बहुत अच्छा एक नया एंगल जोड़ दिया। मैं उस एंगल को बिल्कुल आंसर करूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। नाउ सी, सैलरी पेमेंट तो सर वैसे भी 195 में नहीं आती, सैलरी पेमेंट कम्स अंडर 192। इफ वी गो बैक टू अवर स्लाइड्स, any other sum chargeable under the provision of this act not being income chargeable under the head salaries। तो अगर मैं नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा हूं तो देन ऑल्सो इट विल गो टू 192। ठीक है, बट क्वेश्चन इज कि द पेमेंट, whether the payment will qualify as a salary or whether that payment will qualify as a fee for technical services, this was the question। अब अगर उन एम्प्लॉइज का लीन एंड कंट्रोल इंडिया में है तो वो इंडिया के एम्प्लॉय माने जाएंगे, तो चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, इंडियन कंपनी उनकी सैलरी पे सेक्शन 192 में टीडीएस डिडक्ट करेगी। करेक्ट सुरेश जी? बट if their lien and control is outside India, then they would be considered employee of the foreign company, and now the foreign company needs to deduct the TDS under section 192 on the salary of such employees, और जो इंडियन कंपनी पे कर रही है वो मानी जाएगी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, या the occupancy of the office may create permanent establishment for the foreign company in India। Am I clear on this? देखिए कैसे चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई। अगर वो मेरे एम्प्लॉइज माने जाते हैं, इंडियन कंपनीज के एम्प्लॉइज माने जाते हैं, और वो इंडियन एक्सपैट है सर, एक्सपैट्रिएट्स हैं, जापानीज हैं, बट बीइंग इन 2 years है इंडिया में, तो वो रेजिडेंट बन जाएंगे, आई फेयरली एग्री, बट वो मेरे एम्प्लॉइज है या नहीं है वो अभी भी क्वेश्चन मार्क है। अगर वो मेरे एम्प्लॉइज हैं, मेरे इन द सेंस इंडिया के, वो कब बनेगा? जब उनका लियन एंड कंट्रोल मेरे पास होगा। अगर उनका लियन एंड कंट्रोल मेरे पास नहीं है, जापान के पास है, तो वो जापान के एम्प्लॉइज माने जाएंगे। अगर वो जापान के एम्प्लॉइज माने जाएंगे तो जापान उन एम्प्लॉइज के थ्रू मुझे सर्विस दे रहा है। इट इज सिमिलरली कि मैंने अपना अकाउंटेंट या मित्तल साहब ने मुझे एज एन अकाउंटेंट ब्रिजेश सर के ऑफिस में रखवा दिया। अब ब्रिजेश सर जो फीस दे रहे हैं वो सैलरी दे रहे हैं या अकाउंटिंग सर्विस के चार्जेस दे रहे हैं? दिस वाज द क्वेश्चन। तो अगर मैं ब्रिजेश सर का एम्प्लॉय हूं, ब्रिजेश सर कॉल लेते हैं कि गौरव को कब आना है, कब जाना है, उसकी सैलरी बढ़ाऊं घटाऊं, उसको हटा दूं या रखूं, तो मैं एम्प्लॉय किसका हूं? ब्रिजेश सर का। तो जो वो पेमेंट कर रहे हैं वो गई सैलरी पेमेंट। बट इफ द डिसीजन रिगार्डिंग माई एम्प्लॉयमेंट इज टेकन बाय मित्तल साहब and I am only rendering services to ब्रिजेश जी, then ब्रिजेश जी तो सर्विस रिसीव कर रहे हैं, तो वो जो पे कर रहे हैं वो हो गई फीस फॉर सर्विसेज 195, इंडिया के कंटेक्स्ट में 194J, बट बीइंग नॉन रेजिडेंट क्योंकि वो जापानीज कंपनी को दे रहे हैं इट इज 195। और अगर वो मुझे भी दे रहे हैं तो किस कैपेसिटी में दे रहे हैं? कि आई एम एजेंट ऑफ द फॉरेन कंपनी इन इंडिया, अगेन 195। और जापानीज कंपनी जो मुझे पे कर रही है वो क्या बना? वो बना सैलरी अंडर सेक्शन 192, उस पर टीडीएस आ जाएगा। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म हो जाएगा, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस एग्रीमेंट को जरूर देखें जो सेकॉन्डमेंट या डेपुटेशन एग्रीमेंट है, एंड आफ्टर गोइंग थ्रू द सेम अपना कंक्लूजन, अपना व्यू कंक्लूड करें। सुरेश जी, एम आई क्लियर? और इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी ऑन दिस एस्पेक्ट? Yes, sir. Yes. Okay, so now we do not have any other hand raise, so let me proceed. Do we have any question? We do not have any question also on this aspect. हम धीरे धीरे FTS और रॉयल्टी की तरफ आ रहे हैं।
Now there are some finer aspect, हो सकता है आप सबको पता हो, बट जो मेरे दोस्त थोड़े नए हैं सेक्शन 195 के लिए, उनके लिए मैं क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ. In 195 the word is written any person, so legal status of the payer does not matter. Individual है, HUF है, कोई भी है, TDS would be applicable. The question comes, is it applicable on resident but not on not ordinarily resident? The answer is no. Being it is resident, it is not applicable. Now, Indian company making payment to project office of a foreign company in India. Very good question. अब मेरा आपसे सवाल है कि मान लेते हैं एक जर्मन कंपनी ने इंडिया में ऑफिस खोला. ब्रिजेश सर, आपका ऑफिस का एड्रेस कहाँ पे है आपका ऑफिस? गुड़गांव सर. गुड़गांव में. गुड़गांव में तो बड़े कॉमन केसेस हैं. अब जर्मन कंपनी ने गुड़गांव में ऑफिस खोला, नीचे ब्रिजेश जी का ऑफिस है, और ब्रिजेश जी उस जर्मन कंपनी से सर्विस रिसीव कर रहे हैं. मान लेते हैं ब्रिजेश जी हमारे बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, और जो मेट्रो के काम होते हैं, कंस्ट्रक्शंस होते हैं, बड़े हाई एंड स्टेडियम्स बनते हैं, थिएटर्स बनते हैं, वो ब्रिजेश जी बहुत इंजीनियरिंग बड़ी फर्म है, काम करते हैं. अब इन कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए दे हायर्ड अ जर्मन कंसल्टेंट. वो आए इंडिया में, द प्रोजेक्ट वाज फॉर अ लॉन्गर पीरियड. दे ओपनड अ प्रोजेक्ट ऑफिस इन दी सेम बिल्डिंग वेयर ब्रिजेश जी का ऑफिस है, और वो वहां पे रहेंगे 3-4 साल जब तक प्रोजेक्ट की लेंथ चलती है. नो, ब्रिजेश जी इज taking services from that project office. Project office has got the bank account in India. The address is the Indian address. Just hold on. He is making payment in the normal bank account in India. So the question comes ki whether TDS is applicable or not. If TDS is applicable, then under which section? आवाज नहीं आ रही आपकी. सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि 195 में या 194J में टीडीएस कौन से सेक्शन में एप्लीकेबल है? अगर आप प्रोजेक्ट ऑफिस को पेमेंट कर रहे हैं तो वेदर टीडीएस इज एप्लीकेबल अंडर 195 और 194J. एक सेकंड सर, नवीन भाई बिना सर प्लीज share your answer in the chat box. दोस्तों क्या हुआ, नींद तो नहीं आ रही? आंसर बड़ी स्लोली आ रहे हैं. Whether TDS is applicable under 194J and 194(5). क्वेश्चन बड़ा क्लियर है. प्रोजेक्ट ऑफिस है इंडिया में, एक इंडियन कंपनी उस प्रोजेक्ट ऑफिस को पेमेंट कर रही है, तो टीडीएस कहां काटेंगे? द करेक्ट आंसर इज 195 एंड नॉट 194J. क्यों? क्योंकि यू आर मेकिंग अ पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, और जब नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं तो कौन से सेक्शन में जाते हैं? 195. करेक्ट. अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डू वी नीड 15 CB? Do we need 15 CB and CA? Answer is absolutely yes. Even if you are making remittance in Indian rupee, even if you are making remittance in the Indian bank account, then also you need 15 CB because the transaction is with non-resident and there is no exemption for it. So with your permission, sir, let me move forward. Yes, sir. Say 1 second, sir. 1 second. ये हमने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कंपनी मेकिंग पेमेंट टू द एजेंट ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया. आप एजेंट को दे रहे हैं पैसे फॉरेन कंपनी के इंडिया में, वेदर टीडीएस शुड बी डिडक्टेड अंडर 195 या सम अनदर सेक्शन? आंसर इज सर्टेनली 195 बिकॉज एजेंट दे रहे हैं, एजेंट
foreign company का है तो agent would be considered as a non-resident, मतलब then it would be considered that the payment that we are making is to non-resident, tax should be deducted under 195. What if someone is tax resident in India and foreign country also? अब एक व्यक्ति है, आपका दोस्त है, वो इंडिया में भी टैक्स रेजिडेंट है और फॉरेन कंट्री में भी टैक्स रेजिडेंट है, तो TDS 195 में काटेंगे या कहाँ काटेंगे? आंसर आप चैट बॉक्स में डालें, Q&A में ना डालें. Tricky question. Let's say you are dealing with a person who is tax resident of both the countries. Whether TDS should be deducted in 195 or any other section of the Act. This was the question. Let's say you are receiving some technical services from that person. Hope I am audible to everyone. I am not getting the answers. Habitual abode. See, रेजिडेंशियल स्टेटस तो मैं कह ही रहा हूं दोस्तों कि वो इंडिया का भी रेजिडेंट है, सिंगापुर का भी रेजिडेंट है, मान लो. करेक्ट, पंकज जी का आंसर सही है. 194J देखेंगे, बिकॉज ही इज रेजिडेंट. अब रेजिडेंट है तो रेजिडेंट के हिसाब से करेंगे. अब वो अगर दोनों कंट्रीज का रेजिडेंट है तो किसी ने बहुत ही अच्छा कहा कि हम हैबिचुअल अबोर्ड देखेंगे और उसका रेजिडेंशियल टैक्स फिक्स करेंगे. दैट इज आल्सो वन ऑफ द एंगल. बट व्हेन यू आर इशूइंग, व्हेन यू आर मेकिंग द पेमेंट, देयर आर केस लॉज व्हिच सेज यू कैन सिंपली टेक अ व्यू दैट इफ ही इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया यू विल अप्लाई द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम. बट अगर अदरवाइज व्यू लें जहां पे यू आर सेइंग कि वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा इफ अप्लाइंग द हैबिचुअल अबोर्ड, देन दैट व्यू इज आल्सो करेक्ट. When to check status of payee, resident or non-resident at the time of payment or whichever is earlier. ये छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं फटाफट. So this is interesting aspect. Let's say payer forgot to deduct TDS at the time of provision. See, generally the TDS should be deducted at the time of provision or payment, whichever is earlier. मान लीजिए provision बन गया और आपके पास आता है कोई कि यार मैंने तो TDS नहीं डिडक्ट करा, अब क्या होगा? तो अब क्या करेंगे? So there is a few interesting judgments. They said in the treaty the word paid is used, and then we have a Bombay High Court in the matter of Siemens, Mumbai Tribunal in the matter of Johnson and Johnson and CSE Technology, wherein they have said because the word paid is used in the treaty, the income is not taxable at the time of provision unless it is paid, and thus this is also treaty benefit. TRC वगैरह ले लिया, 10F ले लिया. Now treaty में paid पे applicable है, तो act में provision पे applicable है. You are opting for the more beneficial provision, and thus TDS is not applicable at the time of creating a provision. My earnest advice: use these judgments जब आपका client provision के time पे ना काटे, and there are some challenges. Otherwise, follow 195, whichever is earlier, वहीं TDS deduct करें. These are favorable judgments, but slightly aggressive. Litigation तो for a moment they can create a litigation. Then we have a Delhi tribunal also in case of Pizza Hut International. This aspect I have already discussed कि पैन है नहीं है क्या करें उसमें ना. So now स्कीम जो है, आई थिंक ये हमने डिस्कस कर लिया, हम इससे बाहर आ जाते हैं. इसको ये आप स्लाइड्स आप ले लीजिएगा. आई थिंक दिस वी कैन लीव. मैं केस, दिस इज ऑन इशुएंस ऑफ 15 CB. If the amount is chargeable plus amount is less than 15 lakh, 5 lakh, then what you need to submit is only part A of 15 CA. If amount is chargeable but it is more than 15 lakh, then either you should have a certificate from the officer under section 197, 195 subsection 2 and 195 subsection 3, and you need to file part B of 15 CA, or
you can take a certificate from a chartered accountant under 15 CB plus part C of 15 CA. If it is not chargeable and the bank is not forcing you, then you can do part D of 15 CA. When you are working on the issuance of certificate, I think all these things you can have before issuing the opinion or before issuing the 15 CB. Copy of agreement, emails and other correspondences, understanding facts from the client, using website and Google to develop understanding about the case. It is a very, we have seen practically recently I was working on one opinion regarding, you know, geotagging. It's a आपने देखा होगा एक सॉफ्टवेयर है, आप उसको कहते हैं रोबोट समथिंग लाइक दैट, कि आप उसको गाड़ी चलाते हैं तो आपको बता देता है कि आगे पुलिस वालों की जीप वो स्पीड कैमरा वाले हैं या नहीं है। फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, तो आप जाएंगे तो पता लग जाएगा कि कैमरा है, वो आपको बता देगा स्पीड स्लो कर लो, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड जियो फेंसिंग, दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड जियो फेंसिंग. So as you change your fences, as you change your location, you are tagged to some data, and that data pops up कि यार आप इस एम्बिट में आ गए हो, यहाँ पे ये स्पीडिंग कैमरा लगे हुए नहीं लगे हुए. तो सिमिलर टेक्नोलॉजी पे वी आर वर्किंग ऑन वन ओपिनियन, एंड अभी जितना मैं कंफर्टेबली समझा पा रहा हूँ, टू अंडरस्टैंड जियो फेंसिंग आई थिंक आई इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 5 to 7 hours ऑन द यूट्यूब टू अंडरस्टैंड दिस टेक्नोलॉजी, हाउ दिस टेक्नोलॉजी वर्क्स, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. तो सिंपली ना कई बार एग्रीमेंट ही आपको सब कुछ नहीं बताता. यू नीड टू गो मोर डीपर बिफोर गिविंग योर ओपिनियन वेदर ट्रांजैक्शन इज टैक्सेबल और नॉट. तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बड़े इंटरेस्टिंग केसेस आते हैं. द ओनली थिंग इज यू नीड टू जस्टिफाई देम, यू नीड टू रीड emails, agreements, and do your research before concluding on the technology. Because of technology, we are facing a lot of challenges, and these challenges are very interesting. It gives you boost and it gives you kick क्या हो रहा है दुनिया में. फिर आप टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे, टीआरसी देखेंगे, टीआरसी है या नहीं है, 10F चेक करेंगे, ट्रीटी बेनिफिट देखेंगे, नो पी सर्टिफिकेट, अदर एमआरएल्स वगैरह जो भी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर है वो ले लेंगे, और आप फिर 15 CB रेट डिटरमाइन करते हुए इशू कर देंगे. Let's leave. Now, there are some interesting clauses. One such clause is, make available clause. Now, you will find this make available clause in India USDTA, India UK, India Singapore, India Australia. What it says, fee for include. It is regarding services, and it says fee for included services means payment of any kind to any person in consideration for the rendering of any technical or consultancy services, including through the provision of services of technical or other personal, if such services are ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of right. In short, मैं आपको बताता हूँ, and I'm going to take your queries also on the services. Make available clause का मतलब होता है सक्षम कराना. अगर मैंने आपको ये टेक्नोलॉजी दे दी और उस टेक्नोलॉजी लेने के बाद आपको मेरे पास वापस आने की जरूरत नहीं है, then it is make available. So you will find this मैंने लिस्ट किया US, UK, सिंगापुर, यहाँ पे make available clause का concept है. तो until unless the technology you are making me available, it is not taxable under the DTA. But this make available clause is not there in the act. So the scope of act is wider, scope of the DTA is narrower. So अगर आप इंडिया सिंगापुर का ट्रीटी लगाएंगे और if until unless services are make available, then it would not become taxable. For example, आपने मुझे डिजाइन ड्राइंग दे दी, अब मैं डिजाइन ड्राइंग पे बिल्डिंग बना सकता हूँ, मुझे आपके पास आने की जरूरत नहीं है, then it is make available. बट आपने मुझे ओपिनियन दे दी किसी लॉ के मैटर में, मुझे बार बार आपके पास जाना पड़ेगा ना सर, then it is not make available. तो अगर किसी ट्रीटी में मेक अवेलेबल नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल हो जाती, बट क्योंकि इस ट्रीटी में मेक अवेलेबल है तो दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट टैक्सेबल.
So when you are analyzing FTS, do see from this perspective. Another aspect क्या हो सकता है, for example UAE treaty, we do not have FTS clause. FTS clause ही नहीं है. जहां पे कोई clause missing है, FTS का clause missing है, then it would be considered as business income, and business income is taxable if the non-resident has got permanent establishment in India or a business connection in India. Then it is taxable. Otherwise, it is not taxable. Now, let me take up questions on services. One foreign supplier of Indian entity providing services for foreign client of India, Indian entity abroad, will payment to such foreign supplier from Indian entity will be subject to tax. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पंकज जी का. ये क्वेश्चन क्या है? बेसिकली मान लीजिए मैंने सिंगापुर में कोई प्रोजेक्ट आया मेरे पास. अब प्रोजेक्ट क्या है? मुझे सिंगापुर एंटिटी के लिए कुछ प्रोजेक्ट कुछ बिल्डिंग बनानी है फॉर एग्जांपल. एंड इन ऑर्डर टू बिल्ड अप अ प्रोजेक्ट, एंड देयर कुड बी लॉट ऑफ एंगल्स टू दिस क्वेश्चन. In order to build up a project, I am establishing one project office in Singapore. अब उस पे बहुत सारे इंडियंस काम करेंगे, कुछ फॉरेनर्स भी काम करेंगे प्रोजेक्ट ऑफिस पे. वो मैंने कुछ सिंगापुर के बंदों को रख लिया. अब मुझे उनको पेमेंट करनी है, ठीक है. अब मुझे उनको पेमेंट करनी है तो क्वेश्चन उठता है, क्या मैं उस पेमेंट पे TDS डिडक्ट करूं? आपका क्या व्यू है कि if let's say I've got a project office in Singapore, I'm an Indian, I've got a project office in Singapore, on that project office, few non-residents are working. Should I deduct the TDS under section 195? Whether the transaction is taxable in India? If it is taxable in India, then we need to deduct the TDS. What is your answer? Whether in the facts which I have shared with you, whether the transaction is taxable in India or not. What is your view? यकीन मानिए ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, और मैं वैसे भी अमिताभ बच्चन जैसा नहीं दिखता. आप दिल खोल के आंसर दे सकते हैं. थोड़ी सुस्त होती जा रही है सर हमारी ऑडियंस. नॉन टैक्सेबल आंसर एकदम क्लियर है. इट इज नॉन टैक्सेबल एंड हेंस वी नीड नॉट डिडक्ट द TDS. कंसेप्ट क्या है? वी हैव Section 9, subsection 1, clause 7, and clause 7 का clause B, relief in clause B. Relief in clause B है of sub clause 7 of clause of subsection 1 of section 9. वो क्या कहता है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हैं फॉर द सोर्स ऑफ income outside India or for the purpose of business carried out outside India, then उस केस में transaction is not taxable. Now इस केस में source of income क्या है? outside India. या कोई कह सकता है मैं business India से बाहर कर रहा था, तो मैंने उसी के लिए उसको पेमेंट करी, then it is not taxable. Second example लेते हैं. अब मैंने आपको कहा सिंगापुर कंपनी अप्रोच मी कि गौरव यार एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दो. मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, या मैंने कोई इंडिया से गुड्स बेचे, वहां पे उसको इंस्टॉल करने थे. दैट्स इट. Installation will take maximum some 4-5 hours, 6 hours, maybe 1 day. Now I am making a payment to him for the installation of a particular machine. So whether it is taxable in India or not. Now I am not carrying out business outside India. The source of income is in India because I have executed the project in India. It's only the installation which is happening. Now in this case, 917B is not applicable and it would become taxable in India. Am I clear, Pankaj ji? So I think I have answered your question. Thank you, Pankaj. चंदन जी पूछते हैं, कैन प्रोफेशनल फी पेड आउटसाइड इंडिया बी ट्रीटेड एज FTS और फॉल अंडर अदर पेमेंट? पंकज, चंदन, प्रोफेशनल फी के केस में it is certainly FTS under the act, but we have one more important clause in the DTA which is independent professional services, IPS. अब आपको देखना है कि आप IPS जो पेमेंट कर रहे हैं वो किसी कॉर्पोरेट को कर रहे हैं या किसी
पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, मे बी अ लॉ फर्म को कर रहे हैं. So if it is for a professional fee to a law firm, for example, then most likely it will fall under independent personal services, which is IPS. And IPS is taxable in the source country when the professional firm has got fixed base in India. अगर उसका कोई ऑफिस, कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है इंडिया में, then it is not taxable. So ये हमारे एफटीएस के केस, एफटीएस के क्लॉज से उठ के आईपीएस के क्लॉज में चली जाएगी ट्रीटी में, and it would not be taxable unless we have got fixed base in India. But if it is some professional service having, rendered by a non-resident, which is not falling under the IPS, then it will fall under the FTS clause. तो फिर आप मेक अवेलेबल वाली बात देखेंगे, मेक अवेलेबल क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं है. अगर नहीं है, then it would become taxable in India. Hope I am clear, Chandan. Now we are moving on to the next question. Abhi Hussain Maradia. Singapore-based entity raises invoice in Singapore dollar for professional services provided to Indian company. Singapore-based entity raises invoice in Singapore dollar for professional services provided to Indian company. Okay. And provides a certificate of Singapore tax residency for the Singapore-based entity. They do not have any legal entity registered in India. Is TDS applicable in such transaction? Abid Hussain, what you need to see is whether that transaction is whether that transaction satisfy the make available clause which is there in the Singapore Treaty, because Singapore do have a make available clause, and if the services are not satisfying the make available clause, then it is not a fee for technical services as per the tax treaty, and the income would not be taxable in India. Hope I'm clear, Abid Hussain. But if it satisfied the make available clause, then what it means, the tax transaction is taxable both in the DTA and in the Act, and thus India needs to deduct the TDS at the rate of 10%, which is there in the Singapore Treaty. Hope I'm clear. Yeah, he's already raised the thumb. Okay, great. Your next question is pretty much same. So let me say done. Vishal Shah. Vishal Shah. Vishal is saying, sir, I have a question on applicability of education cess under 206 AA where FTS payment is made. Vishal, it's a bit admin question. Let's avoid this. You may discuss with me over the call. FTS make available specific design made by a foreign company and delivered, then taxable, yes. Any modification will require intervention of, that's okay. But as per the protocol entered by India and US, they have specifically said that this will fall within the, make available clause, and thus, I will like to follow that protocol. Hariji, if an NRI sells shares and deposit capital gain tax on it, then when can CA issue 15 CP after depositing of tax? Or should wait for 5? No, as and when you will sell the share, the 15 CB would be applicable. So, depending upon the fact, so whenever the transaction is happening, at that time, we need to see the applicability. And if 15 CB is applicable, then we need to issue the 15 CB. Hope I am clear. Chandan ji, so thanks Karen, thanks Chandan ji. Ravi Shankar ji is asking, in case of sale of property by NRI, TDS is deducted on total payment or capital gain. Ravi ji, we have discussed this in detail. As per law, it should be deducted on a capital gain. But yes, I would like to add, specifically if you go to Punjab, they have some local authority which says the TDS should be deducted on the entire amount. But as per law, it should be deducted on the capital gain. NRI repatriation, whether no, for repatriation 15 CB is not required as per the law. If the banker asks you, then you may give it. बहुत अच्छा आपने सबके क्वेश्चंस को सॉल्व किया.
It is a wonderful presentation. Abhi, it's still pending, sir. With your permission, let me continue. Definitely. I was just thanking you up till now. Thank you, sir. सर अब आपके स्टूडेंट है, कुछ तो आपकी क्लास में बैठे हैं तो कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा. नहीं, आज तो आपने कमाल कर दिया. Thank you, sir. Now there is another clause which is most favored nation. It is generally found in the protocol. We have most favored nation clause in India, Belgium, India, France, India, Swiss Confederation, India, Spain, India, Sweden, for example. What it says, interestingly, that the DTA which I am reading will not be applicable, but some another DTA would be applicable. So for example, let's say I'm reading DTA of India, France, but there is a make most favored nation clause. What it will say that if I've entered into some more favorable DTA, then that DTA would be applicable. For example, let's say we have a DTA with UK wherein the make available clause is applicable. We have a DTA with France in which make available clause is not applicable. But because of this most favored nation clause, now I need to read UK DTA within France DTA. So though the transaction is taxable, the FTS transaction is taxable in the France DTA, but because of the benefit which is there in the UK treaty, the transaction would also not be taxable in the India-France DTA. So this also needs to be kept in mind while working on the opinions or checking the taxability of a transaction. This is one of the judgment which you can refer. I would be sharing the slide. So it's there in case of Sweden and Portugal. You can look into this. It's a quite detailed one. This is what section 9 briefly is. We have a business connection, property, salaries, dividend, interest, and business connection. Interestingly, now we have a significant economic presence. We have a digital taxation which is going on. So India has introduced both equalization levy 1, equalization levy 2, and recently significant economic presence. It is primarily applicable on the digital transactions. You will not find significant economic presence in double taxation avoidance agreements. So that is the added advantage. So if you have digital transaction wherein you have a user base of more than 3 lakhs or the transaction value of more than 2 crores, the non-resident, then we assume that non-resident has got significant economic presence in India. And because he has got significant economic presence in India, the transaction would become taxable in India. So ये क्या है? Basically, अभी तक, we used to talk about the physical presence, business connection in form of, I've got some office in India or through some agent, there is physical presence. But now, if you wish to do a business, you do not need physical presence. For example, we are doing a webinar which is attended by more than 200 members. You all are sitting at your comfort of office or home. Brijesh sir is sitting somewhere else. I'm sitting in my office. Few friends have joined from Mumbai, Pune, across India. So now we do not need physical presence. So because of the change in the business environment, the change in we do the business, the way we conduct our business is changing. We need change in the taxation system also. So the OECD, along with the G20, started working on this project called base erosion and profit shifting. The very first action point number 1 was on the taxation under digitalized economy. That everything is getting digitalized. So how to tax? Should we still follow brick and mortar system, or should we change our taxing system? So they said they suggested significant economic presence. So you do not have physical presence in India, but you do have economic presence in India. And because you have economic presence in India, I would like to tax you. So we have already there, this SEP is there in the Indian Act. There are different forms of digital taxation. Equalization levy is there also in Indian Act. You may find the same in France and UK and other parts of the world. These are all unilateral measures to tax the digital transaction. Internationally, OECD is working on to come up with the bilateral measure to tax these transactions.
but still, it may take another 6 months to 1 year to finalize things. So now, if you file the return of a non-resident, if you go to, ITR 6, you will find SCP is there. So if you have a client which is non-resident and SCP gets triggered, then until and unless there is a TRC along with a 10F, you may not be giving the treaty benefit, and thus the income would become taxable in India. It's pretty complicated. On Friday, in that national conference on international tax we are doing, we would be devoting approximately 2.5 hours to this very topic. Do come, do it, and I'm telling you, you would all going to gain from it. Then we have dividend interest, FTC, royalty. We have section 9. We have discussed this. I'm not IPS I have covered. This is what taxation of business income. I think we all know business income is taxable if you have business connection in India, and in treaty we call it permanent establishment. If we have business connection in India and treaty is there, then section 90 subsection 2 says, the more beneficial provision are applicable, which means there should be permanent establishment, which is not the case, and hence it is not applicable. TDS would not be deducted. So we need to see applicability of treaty. This I have covered in brief, economic significant presence. Then let's take few questions. Payment of training fee. You are making a training fee. You are making a payment for training fee, whether TDS is applicable or not. The answer is no, it is not. If it's a journal training, then it is not FTS, and hence TDS is not applicable. Payment for bandwidth charges, it is considered as an equipment royalty, and TDS is applicable. Payment for use of server, again, it is considered as equipment royalty, and hence TDS is applicable. Payment for secret formula or process, it is considered as a royalty, and hence TDS is applicable. Payment for copyrighted article, in case of software, we have seen if you are an end user or if you are doing a trader, then it is not royalty under the DTA, but it is a royalty under the Act, and hence it is taxable under the Act. But if you are opting for the DTA, it is not taxable. If you are making payment for the use of brand name or a marketing, then it is a royalty, and hence it is taxable. Payment for design drawing, I have already said it is taxable, but there could be different mode. One, it is outright purchase for use, then it is a good and it is not taxable. If you are not owning the design, you are only using it for manufacturing, then it may be regarded as a royalty because you do not have ownership rights. But whereas I have created a design specifically for you, then it is service and it is FTS. There could be different forms. Payment for purchase of immovable property, we have discussed in depth. Secondment employees, we have discussed in depth. Dividend, we all know now it is taxable. Reimbursement of expenses, there are interesting judgments. Let's say, the fact is, you are a resident, you are an Indian company and you have a holding company outside India. Holding company appoints some third party to carry out some work. And now you are making a payment to the foreign company, to that holding company. Or holding company ने क्या किया है? They have raised a reimbursement invoice on you. Now, जो आप payment कर रहे हैं, it is reimbursement. So the question comes whether one should deduct TDS on reimbursement or not. If you ask my view is, if the payment is as such not taxable. For example, if the reimbursement relates to hotel bill or a travel bill, because they are all business income and in absence of permanent establishment, it is not taxable. So hence we should not deduct the TDS. But if it is as such taxable, let's say, I have received some technical services and I should deduct TDS on technical services, then I should deduct TDS on technical services. But what the judgment says if it is reimbursement, then it is not income chargeable to tax. And if it is not income chargeable to tax, it will not fall under 195. So with due respect to the courts, I have my different view on this. So we have, judgments from Gujarat High Court in the matter of PCI divestment, which says TDS should not be deducted. Payments towards reimbursement of expenses by SSC to a non-resident did not involve any income element.
Therefore, no TDS was required to be deducted on such payments. Similar view was also given by Honorable Bombay High Court in the matter of Siemens, IDFC, WNS Global. There are few judgments which are in favor of withholding the TDS. See inspection by Mumbai Tribunal, but pretty old. Now, the latest judgment is from Gujarat High Court. Then we have Kolkata Tribunal in the matter of Irshad construction. Again, an old judgment from Mumbai Tribunal. So, which way you want to take, it's up to you. The judgments are on both the side. Now, let me end up the presentation quickly, and then I will take up the questions. I think it's good to end. Let me end this. Now, let me go to the questions. If sale of software is in India, input services are paid to software engineer, non-resident USA citizen in USA, is TDS applicable? Prekshani, I'm not clear on your question. Can you raise your hand so that I can allow you to ask the question and share some more detail? Preksha, are you there? Yes, Preksha. Okay, Preksha is on silent mode. Let me move on to the another question. Can NRI apply for lower rate of tax for property situated in Bangalore? Bilkul Ravi ji, one can do it. Now, I think we are done with all questions. Now, let me see if there is anything in chat. Shared expenses incurred by holidaying company recovered from Suresh ji ko to we can allow. Suresh ji, we are allowing you to ask the question. Let me see. Please, sir. Suresh ji, all yours. Thank you very much, sir. In fact, the one holding company outside India, maybe for example in Dubai, they have maybe example in Dubai, they may be having a different subsidy, including one subsidiary in India, and they are incurring certain management expenses for across all their subsidiary. And then the one total bill is aggregated and then shared according to the time spent, or maybe some other formulas, and they're recovering from a different subsidiary across during the year as such. Got your point. So said there can be two scenarios. One, you have there are basically two type of cost. One is the in-house cost. Second is the third-party cost. So generally, the reimbursement is with regard to third-party cost. As far as in-house cost is concerned, it is considered as a service. So, but luckily, if you talk about UAE, we do not have FTS clause in the UAE. So when making a payment to the UAE entity for management fee, it is seen as business income. And if you have TRC, TDS would not be applicable. As far as reimbursements are concerned, we have a Gujarat High Court judgment in favor of you that TDS should not be deducted. Hope I'm clear, sir. Thank you very much. Yes, thank you very much. Any other questions? If we have, I think I'm done, sir. There is no further question left for me. So nice of you. आपने इतना अच्छा presentation दिया कि सच में मेरा मन गदगद हो गया. Thank you, sir. आपका आशीर्वाद है, सर. एक तो आपने अपने presentation के अंदर ही इनबिल्ट करीब 25 क्वेश्चन पूछ लिए और आपने कोई भी मौका नहीं छोड़ा. मैं देख रहा हूँ कभी Q&A, कभी चैट, कभी Q&A, कभी चैट, कोई भी रह ना जाए, कोई भी क्वेरी रह ना जाए. दैट इज वेरी रिस्पॉन्सिबल प्रेजेंटेशन. बहुत अच्छा. और मैं थोड़ा ये कहना चाहूंगा कि जिस समय कहते हैं ना चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो यंग जनरेशन सीखती है और सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको पुश करती है कि भाई तुम भी कुछ करो, खाली मत बैठो नए एरियाज में. तो दैट रिमाइंड्स मी गौरव की जब ये GST आया था, so Tushar was one of my students in 2008-2007. Tushar Agarwal. He used to work in Lakshmi Kumar and Sridharan. Then he started his own practice. So एक साल तक तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि because by that time I was already 56.
और मुझे सब चीज़ें सीखनी थी, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है नई चीज़ों को सीखना और उन पर काम करना। और आज मैं हमारी फर्म में जीएसटी जो है करीब 8 स्टेट से सारी फंक्शनिंग उसको कवर करते हैं। तो आज आपने भी ट्रिगर मेरे को कर दिया है और मुझे लगता है कि उम्र हारेगी नहीं। अब टैक्सेशन में, इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी मेरे पास प्रोफेशनल कभी आउट नहीं होता, कभी आउट नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है ना। जो रामायण में भी मारीच जी थे, ठीक है, वो जामवन जी, सॉरी नॉट मारीच जी, जामवन जी थे। तो जामवन जी एजिड थे, बट हनुमान जी, अगर जामवन जी हनुमान जी को उनकी शक्तियों का आभास नहीं कराते तो युद्ध की रूपरेखा कुछ और ही होती। तो जिस लेवल पे आज आप है, जिस एक्सपीरियंस आप कैरी करते हैं, आई थिंक दी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल दैट यू नीड टू प्ले इज गाइडिंग योर टीम, क्योंकि डायरेक्शन लेस ही तो होते हैं हम सर। मतलब एनर्जी की कमी किसी में नहीं होती, जिसने सीए करी है उसमें एनर्जी तो पूरी है, डेडिकेशन और हार्डवर्क है। और आज आपने लोगों को एक नया रास्ता दिखा दिया कि इस एरिया में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो उनको शुरू करनी चाहिए। और आपने तो स्लाइड्स इतनी बढ़िया बनाई कि क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं और क्या क्या आगे उसमें बढ़ सकते हैं, वो भी उसमें आपने मेंशन किया है। तो अब आप स्लाइड मुझे आप भेज दीजिएगा अपना पीपीटी, मैं भेज दूंगा एंड आई विल सेंड इट टू द मेंबर्स। श्योर सर, श्योर सर। तो इस सबके साथ मैं भी पीछे जी बीच बीच में सुनता रहा, बीच बीच में गायब भी हो गया, बट जितना भी सुना बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया रहा और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कवर किया है। देखो गौरव जी, तो क्या है कि आपके स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट को अगर सुनते हुए देख करके तो गुरु वैसे खुश हो जाता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। और सबसे बड़ी बात है कि गौरव जी हर चीज को बार बार रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इस बात को भी, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत थैंक यू गौरव फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम, और बहुत अच्छा लगा। आई होप कि लोगों के अच्छे कमेंट्स आने चाहिए इस प्रोग्राम की। नहीं, बहुत सारे थैंक्स आए हैं, मेरे ख्याल से 50-60 थैंक्स आए हैं। और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी देखिए, एंड तक 180 पार्टिसिपेंट, 200 पार्टिसिपेंट लोग बैठे रहे। तो एक बार मैं सारे पार्टिसिपेंट्स का फिर से धन्यवाद करता हूं कि आपने सेंट्रल दिल्ली स्टडी सर्कल के प्लेटफॉर्म पर आप आए, और मुझे आशा है कि आप आगे भी हमारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स को ज्वाइन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट। और गौरव जी का अंत में फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और लोगों को प्रेरणा भी दी है। कई लोगों को तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व हुए और प्रेरणा भी दी है कि आपके पास ऐसे क्लाइंट है तो उनको एड्रेस किया जा सकता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, टेक केयर। Now we can close this seminar. Lakshmi, we can close it. Okay, sir. Thank you, Lakshmi. Thank you, sir.